और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नाम के समक्ष दर्शाया गया वक्तव्य सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10 श्री रामनाथ ठाकुर। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज के लिए संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के आगे क्रम संख्या 10 के समक्ष दर्शाए गए वक्तव्य जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत भारत की आकस्मिक निधियों का आहरण के बारे में है, उसे सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11 श्री भूपति राजू श्रीनिवास। श्री अर्जुन मेघवाल जी। Sir, I want to make a statement on behalf of Sri Bhupati Raju Srinivas regarding the status of implementation of the recommendation contained in the third report of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel on demand for grants 2024-2025 pertaining to the Ministry of Steel. Thank you, sir. आइटम नंबर 12 श्री केशव वेणुगोपाल जी। मछुआरा समुदाय के समक्ष आ रही कठिनाइयों के विषय के बारे में मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री केसी वेणुगोपाल जी। Thank you very much, Honorable Speaker, sir, for giving me opportunity. I call the attention of the Minister of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying to the following matter of urgent public importance, and I request that he may make a statement thereon regarding hardship faced by fishermen community. माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय श्री वेणुगोपाल जी। Thank you, sir. अभी टेबल भेज दे, कॉपी भेज। I raise today not just a representative of the people, but as a voice for a community that lives and dies by the sea. A community whose lives are deeply connected with the waves of ocean. Their cries are often drowned out by the roaring waves of indifference and neglect. I speak for our fishermen, the unsung heroes who have the unpredictable seas to bring food to our table. But they live in the shadow of neglect. Across the vast coast of Gujarat to Kanyakumari and Bengal to deep south and in the Andaman Island and Lakshadweep, they live every day at the mercy of nature, stormy seas, harsh winds and uncertain fates. There are the people who feed our nation but struggle to feed their own families, sir. Sir, here in this country there is only one job who didn't have the guarantee of getting wages. Every day fisherman goes to sea for fishing. Morning, evening, night, all time they are going for the fishing. Sometimes they bring with fishes, bring back. Sometimes they come with empty hands. This is the only one. ഈ ഒറ്റ ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാർ ഈ ലോകത്ത്, ഈ രാജ്യത്ത്. ജോലി ചെയ്താലും കൂലി ഉറപ്പില്ലാത്ത ഒരേ ഒരു ജോലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയാണ് എന്ന് പറയട്ടെ, സങ്കടപൂർവ്വം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, വേദനകൾ പലവട്ടം സഭ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ. പക്ഷേ ആ ചർച്ചകളിലൂടെ ഒന്നും ഒരു പരിഹാരവും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങ് അനുവദിച്ച ഈ കോളിംഗ് അറ്റൻഷൻ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. Sir, they do not seek rich or luxuries. All they ask for the dignity of a life without fear, a life where their children can dream beyond the horizon. When I talk about the fishermen, my colleague from Kerala will remember in 2018 when the flood through its own country, it was the fishermen who came with their boats. They reached every corner. They rescued thousands of people. They were the army. They were the angels. But do we remember them, sir? നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ചിരുന്നു സർ. അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ
ഇത് കേരളത്തിന്റെ സൈന്യമാണെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലായി പാവങ്ങൾ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഈ പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ബോട്ടിൽ പോയി ഇവരെ മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവന്നത്. അവരെയാണ് the army of Kerala. That point of time everybody called like them, but whether we are remembering them now, this is a question I need an answer, sir. India is one of the largest fish producing countries. Morning also Honorable Minister replied to a question. The sector provides food, nutrition and livelihood to millions. Yet what do we back to those who sustain? So GDP numbers are very good. Our fishermen contribute to a booming industry, 1.24% of Indian gross value added and 7.28% to agricultural GVA in 2018 and 19. With an average growth of 7.53% in fish production, India's marine fisheries potential is immense. Morning, you spoke about it. Our exclusive economic zone spans over 2.02 million square kilometer, yet the wealth from this remains concentrated in few hands. While the true custodians of the sea, the fishermen, remain in chains of poverty, sir. It's break my heart, sir, Honorable Speaker, to witness this painful irony. Every time I travel across vast coastal such as my constituency, Alappuzha, I see men and women whose lives taste of salt. Not the salt of the ocean, but the salt of tears, sir. Tears of hardship, tears of neglect. These are the tears of those who have given everything to the sea and received nothing but despair in return. Sir, like coastal fishermen, inland fishermen are also there, sir. Apart from the sea-going fishermen, we have a considerable number of inland fishermen. The inland fisheries activities are conducted across an extensive network of rivers and canals, 1.95 lakh kilometer. Footplain lakes, 8.12 lakh hectares. Backwaters, ponds and tanks, reservoirs with an estimated fish production potential about 17 million tons. Currently, the inland fisheries has emerged as a major contributor to the overall fish production in this country. Despite India being the second largest fish producer globally, the government policies and priorities are misguided, sir. The marine fishery sector is a unique and irreplaceable source of livelihood for millions and also our inland fishing communities. Yet, we lack even basic reliable data on the socio-economic conditions of our fishermen. How can we uplift the community when we cannot even measure the suffering of them? We have institutions like the National Fisheries Development Board, NFBD, and the Central Marine Fisheries Research Institute, CMFRI, producing extensive research on fish species and marine resources. But where is the data on those who bring those resources to our shores? Where is the comprehensive national register of fishermen and their living standard? Are they not worthy of recognition, of being counted, of being seen? Sir, coastal zone, our coastal zone of India are among the most productive ecosystem in the world. Yet they were existential threats from sea level rise, coastal erosion and flooding. The government must answer a fundamental question. Who control our coast, sir? Who control our coast? Who is monopolizing our marine wealth while the traditional custodians are pushed aside? Honorable Speaker, sir, it is alarming that one company operates a port of terminal every 500 kilometers along India's 7,516 kilometer long coastline. Only one company has the monopoly. They have, within 500, they have their own one big endeavor. The group now controls 14 ports and terminals, representing 27% of India's total port volume. Ports from Halda in West Bengal to Vizhinjam in Kerala are under their control.
Sir, the problem, what is the problem? In these areas, total privatization of these ports now creating problem for the poor fishermen. Thousands of poor fishermen are being displaced, their livelihoods snatched away, their futures are stolen, sir. Sir, rivers and backwaters, look at I told about inland fishermen, sir. We have much of rivers and backwaters. For my own constituency, I think you had been there. One of the beautiful backwater area in the world itself. Gateway of the backwaters. मुझे आप लेके कब गए जो मैंने देखा ही नहीं? बिल्कुल welcome. I am inviting, sir. Vembanad Lake, our parliamentary affairs minister like that. Vembanad Lake is one of the most beautiful lake. But nowadays, what is the poor fisherman is not in a position to fishing there because complete weed, all Vembanad Lake become weed and mud, and area is also shrinking day by day. Therefore, our water bodies has to be purified, sir. Then only proper fishing can be done in that area. We need to clean our rivers and backwaters, remove the weeds, and bring life back to these waters. Our fishermen deserve a chance to live with dignity. Sir, ma'am, now I am coming to a major point, sir, which I bring into your notice earlier also. Now, Government of India is going for a seashore mining, offshore mining, sir. The government speak of the blue economy, but for whom? Under the offshore areas, Mineral Act 2023, private company will soon drill our sea beds, extracting crude oil, gas and minerals. What will be left for the fishermen, sir? Whose livelihood is tied to these waters? I asked a question. Our IB Eden has asked a question in this session only. The reply given by the mining minister is that before notifying the above blocks in offshore areas, the central government had consulted several key ministries, including Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and the Department of Fisheries under Ministry of Fisheries. This is a direct question to Honourable Minister. Whether the Fisheries Ministry has done a study on impact of this offshore mining. I have data by our scientists. Geological Survey of India, National Institute of Ocean Technology, National Institute of Oceanography, National Center for Polar and Ocean Research, National Geophysical Research Institute and Earth System Science Organization are the agencies involved. These people are not studied any impact on sand mining, offshore mining. There are people who done this study. That type of people, I will tell you, sir, their studies suggest that offshore sand mining is often poorly managed, leading to severe environmental, social and economical consequences. There is a knowledge gap in offshore sand mining management and sustainability, and we need to conduct additional research to fill this gap. According to FAO Global Fish Research Program Volume 122 2016, the main expected impact from seabed mining are 1. Changes in the seabed landscape by removing nodules from the sea floor. Number 2, changes in the marine habitat that sustain different forms of life. Number 3, sediment plumps, which will cause a reduction of oxygen and light in the water column and the introduction of metal into the water column. Next, disruption of the seafloor and redistribution of sediments, causing some benthic ecosystem and creatures to be buried. 5, very slow ecosystem recovery from the changes to the seafloor and displacement of marine life. Sir, this much serious impact, our scientists are predicting about this much serious impact on offshore mining. Our Fisheries Ministry Department is already consented for this. But for whom this Fisheries Department is working? This is for mining people or the fishermen? My direct question to you, sir. Are you working for the mining companies or the poor fishermen of this country? Sir, this is this much impactful
this much impactful mining, how can you allow, sir, without a proper study? Fishers, sir, my point is coming. So without a proper study, they are doing. Premachandran already raised this issue. This Kollam area, Alappuzha area, my constituency, now they are already done tenders. Now they are going to do mining. Entire fishermen is in agitation. Kerala Assembly unanimously passed the resolution and they wrote to you, Minister. No action. The government has to come. Yesterday, our Honorable LOP Rahul Gandhiji wrote to Prime Minister to withdraw the name from the mining. Somebody has to stop this mining. Government side has to come forward onto mining to give a rescue for the poor fishermen of this country. That's why my valid point, sir, I am trying to tell that we cannot allow these things, sir. Because otherwise also fishermen are, yes, you are not even allowing a construction of houses for the fishermen, poor fishermen. When the fisherman is going to construct a house, you will tell CRZ norms are there, you are not allowed to construct a small house. Now, large scale mining, they can do in sea. No problem. No environmental impact study. Nothing is there. Now, what government is telling, after tender, if somebody took a tender company has to do environmental impact study. What is it? Like letting the folks guard the hen house. Honorable member, please address chair. Sir, okay, sir. Sorry, sir. Sir, this is what letting the folks guard the hen house. This is what happened. The company has to do environmental impact study. This is ridiculous. Basically, therefore, this reckless pursuit of profit is robbing our fishermen of their heritage, their dignity, and their means of survival. Our coastal communities, environmentalists, and marine scientists are united in protest. Majority of the political parties are in protest. Then why government of India is doing all these things? My submission to the Fisheries Minister, you are a senior most leader of the ruling party also. Tell the Prime Minister and to at least stop this mining process there. Sir, I am already talked about the housing issue, CRZ norms. Some amendments has been done. That's also not sufficient. Poor fishermen is not having a position to construct the dwelling houses. The government has to come forward with a clear-cut, flexible idea on CRZ. The major point, IB morning raised the issue of sea erosion. Sir, you see this is shocking. 70% of the world beaches are vanishing in India. The ocean waves and currents are eating away our shores. In undeveloped places. 2 minutes. In undeveloped places, erosion comes and goes. But in developed areas, it is a disaster. A study of the National Center for Coastal Research shows Kerala is one of the worst states. More than 46% of Kerala coast has been eroded, sir, through this sea erosion. There were actually earlier times, sir, the coasts are not just land, sir. They are our borders. They are as important as our northern and western boundaries. The sea brings dangers, terrorism, sir, trafficking, sir, and drug smuggling happening through sea, sir, now. But erosion is threat too. So it is taking away land and destroying the lives of fishermen and coastal communities. These are the same people who risk their lives in flood to save others. Now we turn away the sea distortion home. Sir, one more point, sir. Kerosene, subsidized kerosene. Kerala alone has 1.95 lakh fishermen who go out to sea every day. The sea is their life. It gives a living to 8.04 lakh fisherfolk. Those traditional fishermen are use small boats with outboard motors that run on kerosene. There are around 30,000 such boats in Kerala, but the kerosene they need is just there. Kerala fishermen need 51,000 kilometers of kerosene every year. But the central government keep cutting the quota. 2021, Kerala got only 11,640 kiloliters. In 2023, is only 7,160, sir. In 23-24, sir, 7,160, sir. In 23-24, sir, just 3,300 kiloliters. And this year is shocking, only 648 kiloliters. This is nothing other than cruelty, sir. Sir, therefore subsidized kerosene has to be increased. Last, sir, because they are not getting sufficient kerosene, they have to depend upon loans. Now entire fisherman is in a debt trap, sir.
They are in a debt. They are in a suicidal mood. Sir, ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം. മണ്ണെണ്ണ കിട്ടാനില്ല, കടലിൽ പോയ മീൻ കിട്ടാനില്ല. അവസാനം ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചാൽ ആ കടം വാങ്ങിച്ച ബാങ്കുകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിദയനീയമായ സാഹചര്യം ഇതുപോലെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി നേരിടുന്ന ഫിഷർമെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സർ. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഓഫ് ഷോർ മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി എല്ലാ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാക്കും. പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയുടെ പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ ആരുമില്ല സർ. ആ പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ ഈ സർക്കാർ ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കോളിംഗ് അറ്റൻഷൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സർ. I would request the Honorable Minister kindly look into these issues in favor of you are given a statement. Our statement is covering up some issues what we are doing central government, but what you are doing specifically for fishermen house, their drinking water, their debt, nothing is covered. Please think about the poor fishermen of this country. Thank you very much sir. CTR बालू जी, अब केवल प्रश्न पूछना है. आप सीनियर लीडर है, कॉल अटेंशन में मेन व्यक्ति. I understand, sir. So I'll be very short. Kindly give me a few minutes. So actually, with a heavy heart, I should like to call the attention of the Honorable Minister for Fisheries about the sad plight of Indian fishermen, especially fishermen from Tamil Nadu, who are day in, day out, are subjected to hardship in the hands of Sri Lankan security forces. And every day, government of Tamil Nadu is writing to the state guards to intervene and see that proper action is taken, or the government of Sri Lanka should be advised properly so that things may not go wrong. Sir, on 18th February, I made an observation in this house itself. On 18th February, sometime back, I made an observation. On 18th February, Honorable Minister for External Affairs Jay Shankar has returned to me. But this is also it's a subject matter connected to the two ministries. So he has said, I quote, Prime Minister during the state visit of President Anurag Kumar Dissanayake on 15th to 17th December 2024 urged the President of Dissanayake to treat the fishermen issue as a humanitarian one with the livelihood concerns, as well as to avoid use of force under all circumstances. Further raised the issue of frequent arrests, longer sentences and penalties levied on Indian fishermen with the Sri Lankan President as well. In addition, we have requested President Dissanayake for the early release and repatriation of detained Indian fishermen boats and convening of next round of fishermen levels. Sir, the things is different in the ground. The ground reality is different. Yesterday I had a discussion with the President of the Fishermen Association of Rameswaram. He categorically said, sir, ministry is saying something, but here in the grounds, in the fishing grounds, things are different. Each and every day, fishermen, the security forces are coming and they are arresting, not only arresting the fishermen, but also arresting the boat. They are taking away everything to the destination. And finally, the fishermen were arrested. For your information, 20 fishermen is in jail for the past 6 months. What sin has they have done it, sir? Say more than 6 months, more than six, not 1 or 2 months or few days, not 1 or 2 months or few days. More than 6 months they are in the languishing in the jail, and more than 70 fishermen are in and out of Rameswaram and Pudukkottai and elsewhere. They are in the various jail for inquiry. They are keeping them for inquiries. So my only request, I won't take much time. Don't. Sir, actually, the fishermen of that area who are going for the daily wages, daily the bread, they are being harassed. A country who is having friendly connection with India, they are doing a very small country. They are just making lot of nuisance to fishermen. This is not fair, sir.
So my only request is, Honorable Prime Minister is likely to go to Sri Lanka shortly, it seems. I don't know the exact date and thing. But during the discussion with Disanayaga, there should be a lasting peace agreement. There should be a discussion, and finally there should have a lasting peace agreement with all the stakeholders, especially with the fishermen of Sri Lanka, Tamil Nadu, India, and the representatives of both the government. They should take immediate action, otherwise things will go wrong, sir. Thank you, sir. Shri N.K. Premchandan. Thank you very much, Honorable Speaker, sir. This may be the first calling attention motion during this budget session. We are thankful to the Honorable Speaker for allowing such an important issue, and also thanks to Honorable learned friend Shri K.C. Venugopal for calling the attention of the Honorable Minister regarding the fisheries issue. Sir, I am not going to repeat the issues which have already been enlisted by my learned friend Shri K.C. Venugopal. Sir, the pathetic condition of the fishermen in the coastal area, there is no words to explain it. It is just like that of the tribal people in the mountain area. Sir, fishing is the only main source of income of the fishermen is the fishing. But due to the unsustainable fishing practices, deplete the fishing stocks, impacting the livelihoods of the fishermen and the health of the marine ecosystem. Rising sea temperatures, changing ocean currents and increased storm activity can disrupt the fishing grounds and threaten fish populations. And pollution from industrial and agricultural sources can contaminate fish population and make them unsafe for consumption. Sir, after the tsunami and Oki disaster in the state of Kerala and throughout the country, the quantity or the abundant fish wealth has declined like anything. In such a situation, I would like to know from the Honorable Minister, I am seeking the clarification. Clarification number one is regarding, we have passed, the Parliament has passed the law Right to Forest Act. During the UPA time, we have passed a very revolutionary enactment has been made, that is Right to Forest Act. The tribal people are having the right to enjoy the benefits of the forest. And likewise, I would like to seek a clarification or like to seek a response from the Honorable Minister, whether the government of India will think of passing a legislation, the Right to Sea Act, so as to protect the interests of the fishermen in the country. Number one. Sir, number two is yes, rightly explained regarding the offshore. Yes, sir. This is calling attention. Sir, the second one is regarding the Offshore Mines and Minerals Development Area Development Act, which was passed in the year 2023. Sir, pardon? Sir, as has rightly pointed out, that is deep sand mining in the offshore. And Parappu area in my constituency and Alappuzha, 85 kilometers of length is there. Now the tender has been invited so as to have the sand mining. Definitely there is no doubt that the marine ecosystem will be disrupted like anything, and that will be adversely affecting the coastal fishermen. So my submission is whether, considering the agitation now which is going on in the state of Kerala, and even yesterday the leader of the opposition has rightly pointed out that it will be adversely affecting the interests of the coastal fishermen. Would the government will reconsider and recall the tender? Because without having the environmental impact assessment, without having the social impact assessment, let me conclude. Without having this is being done, so I would like to know from the Honorable Minister, would the government will recall the tender and have a discussion at large? Without having all these things, it cannot be allowed. These are the 2 points which I would like. Thank you, sir. In fact, thank you very much for permitting this entire discussion. I do have 5 clarifications to ask the Minister, sir, because these are issues I have been raising for 15 years in this House without satisfactory response. I'll be very brief on each of them. Number one, sir, coastal erosion. Yes, sir. I mean, coastal erosion, something that affects my constituency gravely. Ferocious monsoons have been devastating our coastline, destroying homes and livelihoods, and the fisher folk are suffering terribly because of a lack of adequate sea walls and groins. This issue was raised this morning by my colleague Haibi Eden. The minister's reply put the entire onus on the state government. The state government says they don't have the resources. So Bharat Mata ki dharti ja rahi hai. Ye jo akraman ho raha hai samudra se, hamari dharti ja rahe, मेरी
कंस्टिट्यूएंसी से 64 स्क्वायर किलोमीटर्स चले गए हैं, तो उसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है? आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द मिनिस्टर to assume the responsibility for protecting Indian territory. Second, sir, lack of fishing harbors. You've talked about the PMMSY supporting 100 coastal villages, but the coastal villages are not enough. They need harbors. We have, in my constituency, we have 28% of Kerala's fishermen, sir, and they have absolutely no harbors other than one major port that's now coming up. Hundreds of fishermen are literally unable to make a living. They have long-standing demands for fishing harbors in places like Puntura and Valiyadura, but no action has been taken. Okay. We would appreciate some clarification from the minister. Number three, sir, kerosene shortage. This has been raised by many members. I'll be very brief. जो विषय एक बार उठ गए हैं उसको दोबारा क्यों उठा? 5 प्रश्न है sir. तीसरा ये है that the question again, once again, is the government says they would like to encourage our fisher people to shift to cleaner fuels like LPG and PNG and so on. But they don't have engines. These are poor people. They have kerosene-fueled engines on their traditional fishing craft. Can the government, if they cannot give subsidized kerosene, can they subsidize new engines to use the fuel the government wants them to use? That clarification should be given, sir. 2 more. On offshore mining, sir, one simple question. I had asked a question last month, to which I got a reply from the minister. No, sir, one second. And the reply from the minister says very clearly that they have not conducted an environmental impact assessment on offshore mining. When can that be done? And finally, sir, I have also raised in this House the persistence of illegal fishing practices such as bull trawling and pair trawling in the waters of Kerala. We have asked the government in this House, sir, to actually engage the Coast Guard and the Navy to protect our fisher folk and their livelihood. Again, will the government in the clarification let us know what they're doing about this? These issues have been raised in the House earlier. Thank you for this great opportunity. I would like to congratulate the Honorable Senior Member Shri K.C. Venugopal ji for the calling attention, which I wholeheartedly support because this is a very important matter, sir. Sir, my specific question to the Honorable Minister through you is, we have state-of-the-art institutions in India like the CMFRI, Central Marine Fisheries Research Institute, SIFT, SIFNet, KUFOS, KUZAT, CSIR, and many other organizations related to scientific study of the ocean and the marine-related activities. Sir, does any of these organizations have done a scientific study on the offshore mining, its environmental impact? And sir, how can the government of India give the tender to the study? Sir, concluding. How can the government give the tender of the environment impact study to the same company who does the offshore mining? Sir, it is disastrous, sir. I would like you to intervene in this matter and Sir, thank you, sir. I fully associate with the expression and the opinion expressed by Honorable K.C. Venugopal and others. Sir, one question also. Sir, the coastal belt faces frequent climate disruption like cyclone and extreme weather. Does the government of India have any large-scale climate resilience? Has the central government conduct any studies in mitigate this impact? And considering the success of the geotop offshore breakwater in some places in Kerala shore, does the central government envisage expanding this innovative mode of other coastal region with the provision of adequate funds? Shafi Paramveer, Ram Shankar Rajbhar. हमारे संसदीय क्षेत्र में तुरहा ताल है और मैदानी क्षेत्रों में जितने ताल और नदियां हैं वहां की समस्या मानवर दूसरी है। नाव भी मछुआरों के नाम नहीं होती। बड़े बड़े ठेकेदार एक मछुआ को पकड़ते हैं और नाव का ठेका ले लेते हैं मछली मारने का पोखरों के, और मछुआरों के नाम से नाम और जाल नहीं होती, केवल वो मजदूरी पर रख लिए जाते हैं। मैं सरकार के ध्यान रखना चाहता हूं महोदय कि कम से कम मछुआरों को नाव से, जाल से और ठीके से इतना प्रतिबंधित किया जाए, दिया जाए इस तरह से कि वो स्वावलंबी हों। और दूसरा मानवर, यह नियम है कि मछुआरे नदियों के किनारे और पोखरों के किनारे, तालाबों के किनारे मछली मारते हैं, वही मंडई डाल के रहते हैं। यह व्यवस्था भी है मत्स्य पालन द्वारा कि उन मछुआरों का घर बनाया जाएगा, लेकिन यह
अभी तक उन मछुआरों का कोई घर भी नहीं बना। यह मैं सरकार से कहना चाहता हूं। 1 मिनट बोल ले कनिमोजी जी, 1 सेकंड। Thank you, sir. Sir, I'd like to ask the minister and get a clarification. Many boats, over 200 boats have been taken away by the Sri Lankan army, the Navy, and it has been nationalized by the Sri Lankan government. Will the Fisheries Department or the Government of India give some compensation to these fishermen who have lost their boats? Arvind Sawant. Earlier it was done, sir. I want to know whether they will give a compensation because the Tamil Nadu government is giving it. Arvind Sawant. Thank you, माननीय अध्यक्ष साहब। मुंबई बंदर में जो सारी हमारी कोकण के बहुत बड़ा किनारा है, 720 किलोमीटर का किनारा है महाराष्ट्र, और वहाँ बेचारे फिशरमैन जो है मछुआरे अपना काम करते हैं। सबसे पहली समस्या उनको 2 आती है। इसमें एक पहली आती कि केरोसिन नहीं मिलता, उनको डीजल और केरोसिन दोनों लगते हैं। तो केरोसिन मिलता, डीजल सब्सिडी भी मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। उसके बाद में फिशरमैन और तकलीफ में आते हैं। और दूसरी बात है, जो हवामान में बदलाव आता है, तो कभी लाल झंडा बोलते हैं वो लोग, वो लाल झंडा कभी समय पे फैलता है, तब तक अंदर वो शिपिंग के लिए जाते हैं। तो वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर भी मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। ये 2 काम महत्वपूर्ण है। मुंबई, एक वाकया और है, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी जो कुछ डेवलपमेंट करती है वो मछुआरों को विश्वास में लेकर करे तो उनके लिए सहायता होगी। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपका नहीं, माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य वेणुगोपाल जी ने कई बातों की चर्चा की। उसमें एक उनका है कि जो 30 मिलियन, लगभग 30 मिलियन मछुआरे भाई हैं और गरीब हैं, वास्तव में गरीब हैं, उनके प्रति सरकार का इंडिफरेंस और नेग्लेक्ट, ये सही नहीं है अध्यक्ष। बल्कि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ही उनकी गरीबी पर ध्यान दिया और उनके उत्थान के लिए योजनाएं की। और आज उसका परिणाम है कि हमारा मत्स्य उत्पादन पूरे दुनिया में दूसरे स्थान पर है। आपने भी वर्षों तक शासन किया इस देश में। 2013 तक आपने शासन किया, 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी आए। आपके समय में तो मछुआरे भाई जो हैं वो भूखमरी के कगार पर थे। आज हम आपको बताएंगे अध्यक्ष महोदय, और माननीय सदस्य को भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया जिसके कारण आज मछुआरे समुदाय के लोग सुखमय जीवन जीते रहे और कुछ हद तक उनके दूर हुई है। आपको बताएंगे। आपको देखिए, आप वेणुगोपाल जी, आपको जब हम आईना दिखा रहे हैं तो अपना चेहरा देख के आपको क्यों चिढ़ हो रहा है? अरे अपना चेहरा तो देखिए, क्या किया आपने। अब ये ऑफशोर माइनिंग की बात कर रहे थे, पहले हम उसी का अध्यक्ष महोदय जवाब दे देते हैं। ऑफशोर माइनिंग का कोई कंसेप्ट इस देश में नहीं था। सबसे पहला ऑफशोर माइनिंग का कंसेप्ट अगर लाया तो यूपीए सरकार ने ऑफशोर एरियाज एंड मिनरल एंड डेवलपमेंट एक्ट 2002 यहां इस सदन में पास कराया और उसके बाद से हुआ। सुन लीजिए, अरे बैठिए, पूरा सुनिए, आप सुनिए बात, अरे सुनिए तो सही, अरे आप बतवा तो पूरा, अरे पूरा सुनिए तो सही, अभी पूरा बता रहे हैं ना। अरे आपको पूरा बात कहां सुन रहे हैं। उसके बाद 2010 में इन्होंने रूल्स बनाए। आज तक कोई ऑफशोर माइनिंग केरला में या किसी समुद्री तट में प्रारंभ ही नहीं हुआ है, तो उसके कहां सवाल है, उसके प्रभाव का, कुप्रभाव का? कोई नहीं हुआ है। सिर्फ हम आपको बताना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि एनआईटी, उसके लिए एनआईटी 13 ब्लॉक्स के लिए नवंबर में जारी हुआ है, नवंबर 2024 में, और उसमें मात्र 3 ब्लॉक्स हैं
जो केरला के हैं और वह भी 12 नॉटिकल माइल से बाहर के हैं जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। आप कहां से बात कर रहे हैं ऑफशोर माइनिंग की बात? आज तक तो ऑफशोर माइनिंग प्रारंभ ही नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि उसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, सारे लोग बात कर रहे हैं। अरे आप सारी बात, और ये पूरा मामला खनन मंत्रालय से है। हमने खनन मंत्रालय से जो सूचना प्राप्त किया है उसके आधार पर हम इनको बता रहे हैं। अब ये हम इनको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये मछुआरे समाज के इंडिफरेंस और नेग्लेक्ट की बात कर रहे थे, हम इनको बताना चाहते हैं कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली तो हर क्षेत्र के लोगों पर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी सोच रही है कि अगर हमको देश को आगे बढ़ाना है तो समाज के हर तबके को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए उन्होंने फिशरी सेक्टर को किया। 2019 में उन्होंने इस विभाग को अलग किया, 2019 में अलग इस विभाग को किया। उसके पहले ब्लू रिवॉल्यूशन से उन्होंने शुरू किया इस क्षेत्र के लोगों के और मछुआरा भाइयों के कल्याण की योजनाओं का। 2000 नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, उसके बाद फिशरी डिपार्टमेंट को अलग किया 2019 में उन्होंने, ताकि उस पर फोकस हो सके, उस पर ध्यान केंद्रित करके उन पर ध्यान दिया जा सके। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना उन्होंने चलाया, और इस सब के बाद उन्होंने फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF बनाया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और भी योगदान हो सके। और ये उनका प्रयास रहा, और उनके प्रयास के कारण इसके कारण आज आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट पूरे देश में बड़े पैमाने पर हुआ। अभी शशि थरूर साहब बोल रहे थे, शशि थरूर साहब मुझसे भी मिले थे। मुझको सहानुभूति है उनकी समस्या के साथ। मैंने उनको बताया भी है अध्यक्ष महोदय कि आपकी समस्या के साथ मेरी सहानुभूति है, लेकिन उसका रास्ता है कि राज्य सरकार से थोड़ा रिश्ता ठीक कर लीजिए तो आपका बाकी सब कल्याण हो जाएगा। अब उनके पास पैसे नहीं है, आपको देने के लिए नहीं है, आपको देने के लिए थरूर साहब नहीं है। आप थोड़ा रिश्ता सुधार लीजिएगा तो आपका भी के लिए पैसा निकल आएगा। तो हमने आपको बताया है उनके पास पैसे नहीं, हमारे पास ये तो अपोजिशन में रिश्ता क्यों सुधारेंगे? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के इनिशिएटिव के कारण पूरे कोस्टल इलाके में फिशिंग हार्बर्स और लैंडिंग सेंटर्स का विस्तार हुआ। वैसल के लिए सुरक्षित लैंडिंग बर्थिंग बनाई गई, लोडिंग और अनलोडिंग की सुविधा के लिए सारे प्रयास किए गए, और उसका परिणाम है FIDF के तहत। हमने बताया कि FIDF के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर का और डेवलपमेंट हुआ। केरला की बात वो कर रहे हैं, हम केरला की भी बात बता देते हैं। 1358.10 करोड़ की रुपए की योजना केरला राज्य के लिए भी स्वीकृत हुई, इसलिए कि मोदी सरकार का यह मानना है कि कोई भी राज्य के साथ, किसी भी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, सबके लिए समान रूप से विचार करना है। सबका उत्थान होगा तब देश का उत्थान होगा, तब विकसित देश का निर्माण होगा। केरला में 12 फिशिंग हार्बर्स का विस्तार हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। 1,69,316 मछुआरा भाइयों को प्रतिबंध की अवधि में उनको सहायता प्रदान की गई। नाव दिया गया वहां के मछुआरा भाइयों को, जाल दिया गया जो गरीब लोग थे। कौशल विकास और क्षमता निर्माण, स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चला के उनमें कौशल विकास और क्षमता निर्माण कराया गया। आर्टिफिशियल रिफ्स का निर्माण हुआ, मत्स्य सेवा केंद्र का वहां गठन हुआ। 6 मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेज हैं, जहां पर जो
वो चर्चा कर रहे थे पीने के पानी का, सारी सुविधा का, उन सारी सुविधाओं का इस्तेमाल वहां प्रावधान किया गया है। मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेजेस में 9 और 6 क्लाइमेट रेसिलेंट विलेजेस का निर्माण भी केरल में स्वीकृत किया गया है, चयन उसका हुआ है और नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड को उसका नोडल एजेंसी बनाया गया, उसका निर्माण होगा। तो मछुआरा भाइयों के लिए सारी समस्याओं के समाधान के लिए मोदी जी की सरकार चिंतित है। उसके अलावा इन्होंने कहा मोदी जी की सरकार ने मछुआरा भाइयों के लिए सोशल और इकोनॉमिकल तथा उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देने का काम मोदी सरकार ने किया। ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम किसने चलाई? ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम मोदी जी की सोच का परिणाम है कि मछुआरा भाइयों को जब दुर्घटना में उनकी मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपए, अगर गंभीर रूप से घायल है तो 2.5 लाख रुपए और कम बीमार है, घायल है तो 25,000 रुपए की सहायता उनको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम से दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड किसकी योजना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। किसके उत्थान के लिए है? उन मछुआरा भाइयों के उत्थान के लिए है। बीड कल्टीवेशन किसका सोच है? इस सरकार का सोच है। मैरीकल्चर उनके आर्थिक उन्नति के लिए, ओपन सी केज कल्चर, ऑर्नामेंटल फिशरीज को बढ़ाया गया ताकि उनकी आमदनी बढ़े। पारंपरिक मछुआरे के लिए जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है उनके लिए नाव और जाल की व्यवस्था की गई। डीप सी वेसल्स के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया। फिशिंग वेसल्स का अपग्रेडेशन हुआ। ट्रांसपॉन्डर, जो आज की तारीख में ट्रांसपॉन्डर जिसकी चर्चा बालू साहब कर रहे थे और कई साथी कर रहे थे कि बॉर्डर पार कर जाते हैं हमारे फिशरमैन फिशिंग करते हुए, ट्रांसपॉन्डर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया पालघर से, महाराष्ट्र से। वह ट्रांसपॉन्डर एक ऐसा हथियार है जो मछुआरे भाइयों को अपनी सीमा के क्रॉस जैसे ही करेंगे देश की सीमा, उनको सिग्नल देगा कि आप देश की सीमा क्रॉस कर रहे हो। वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, वो किसी भी एंड्रॉयड फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है और उसके माध्यम से उनको सूचना मिलेगी। ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से उनको समुद्री तूफान की सूचना मिलेगी। ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से उनको यह जानकारी भी मिलेगी कि कौन से इलाके में आपका कैच ज्यादा संख्या में उपलब्ध है, वहां फिशिंग करने का काम करिए। उनका डीजल बचेगा, उनका केरोसिन बचेगा, उनको मेहनत कम करना पड़ेगा, कैच उपलब्ध होगा। वो अपने परिवार के साथ जुड़े रहेंगे उस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से। वो अपने मालिक, वेसल्स के मालिक के साथ जुड़े रहेंगे उस ट्रांसपॉन्डर के माध्यम से। 1 लाख मछुआरा भाइयों को मुफ्त ट्रांसपॉन्डर्स देने की सरकार का फैसला है और कई राज्यों में उसका काम शुरू हो गया है, दिया जा रहा है मछुआरा भाइयों को। तो ट्रांसपॉन्डर्स की सुविधा हो गई। 100 कोस्टल विलेजेस को 100% वित्त सब पोषण के साथ कोस्टल फिशरमैन रेसिलिएंट विलेज के रूप में चिन्हित किया गया है, उनका चयन हुआ है। उसके अलावा मछुआरा भाइयों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कीट हेतु फंड निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जीपीएस की सुविधा दी जाती है, लाइफ जैकेट उनको दिया जाता है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर उनको दिया जाता है, सर्च एंड रेस्क्यू बीकन उनको दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं किसके लिए है? ये सारी सुविधाएं और ये सारा की व्यवस्था उन मछुआरा भाइयों के लिए की गई है। तो मछुआरा भाइयों की चिंता मोदी सरकार ने किया है, आपकी सरकार ने इतने दिन तक नहीं किया। और मोदी जी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसी प्रयास का परिणाम है, आज दिख रहा है वो प्रयास। 2013-14 में आप फिश प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे वेणुगोपाल साहब कि मछुआरा भाई सुबह जाते हैं, शाम को बिना मछली के आ जाते हैं, उनकी रोजी रोटी का क्या होगा? वो भूखे मरेंगे। 2013-14 तक आपकी जब सरकार थी 95.7 लाख टन फिश प्रोडक्शन होता था और मोदी जी की सरकार के 10 साल के शासनकाल में 184.02 लाख टन
फिश का प्रोडक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है ये प्रोडक्शन? वही मछुआरा भाई कर रहे हैं, जो आज समुद्र से मछली मार के लाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान करते हैं और अपनी रोजी रोटी के लिए भी काम करते हैं। एक्सपोर्ट बढ़ा हमारा 2013-14 में आपके शासनकाल में 30,212 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता था। आज 23-24 में दोगुना 60,523 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होने का काम हुआ। 10 वर्ष में हमने दोगुना करने का काम किया है। तो इसलिए कोस्टल इलाके में इस झींगा के उत्पादन में आपके शासनकाल में 3.22 लाख टन होता था। मोदी जी के शासनकाल में 23-24 में 11.84 लाख टन झींगा का उत्पादन हुआ है। ये आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि फिशरी सेक्टर में कोई प्रयास नहीं हुआ, फिशरमैन पर ध्यान नहीं दिया गया, फिशरमैन नेग्लेक्टेड है, फिशरमैन इंडिफरेंस है। ये क्या तरीका है? ये नहीं है। जीबीए में, आपका जीबीओ में भी बता दें, जीबीए में 9.08% का रेगुलर ग्रोथ है हमारे जीबीए में फिशरी सेक्टर का। जीबीए में 2014-15 में 0.844% था फिशरी का कंट्रीब्यूशन जीबीए में। आज बढ़कर वो 1.12% हो गया है 22-23 में। ये है उपलब्धि। आप कह रहे हैं कृषि के टोटल ओवरऑल एग्रीकल्चर के जीबीए में, तो जीबीए में 14-15 में 5.12% था, आज बढ़कर 7.2% हो गया है, जो 41.79% का ग्रोथ है। आपको क्या समझ में आएगा? इसलिए आपको कोई समझ में नहीं आएगा, आपको कोई बात समझ में आती नहीं है। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आपको ये बताना चाहते हैं। इन्होंने कहा, बालू साहब ने और कई सदस्यों ने श्रीलंका के साथ बात करने की बात बताई। श्रीलंका में जो नाव जब्त होते हैं, जब हमारे मछुआरे भाई श्रीलंका का बॉर्डर में चले जाते हैं, तब की बात है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 6 ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है। ऑनरेबल प्रधानमंत्री ने भी कई बार इस मामले को उठाया है, विदेश मंत्रालय इस मामले को लगातार उठा रहा है और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है, उसकी 6 बैठकें हो चुकी है। तो इसलिए मोदी सरकार में मत्स्य पालन के क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है, मछुआरे भाई का उत्थान हो रहा है, उनके उत्थान के लिए सरकार काम कर रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की है, वे व्यक्तिगत रूप से अनुबंधित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आइटम नंबर 12, तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024। माननीय मंत्री जी। Sir, I rise to move that the Coastal Shipping Bill 2024 to consolidate and amend the law relating to regulation of coastal shipping, promote coasting trade and encourage domestic participation therein to ensure that India is equipped with a coastal fleet owned and operated by the citizen of India for its national security and commercial needs, and for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. Sir, Coastal Shipping Bill, a significant reforms initiative that seek to unlock the full potential of India's vast and strategic coastline, which stretches over 11,098 kilometers across 9 coastal states and 4 union territories. At a time when our logistics sector is looking for low-cost, reliable and sustainable alternative to overburdened road and rail network, this bill offers the maritime sector a
a much-needed push with a dedicated legal framework for coastal trade. The provision of the Coastal Shipping Bill 2024 are also in line with the broad vision of the National Logistic Policy as dedicated development of the coastal shipping sector, which is one of the most cost-efficient sources of transport, can play a significant role in lowering the overall cost of logistics for the country. Additionally, coastal shipping is also a sustainable mode of transport, as the emission level of coastal transport are much less compared to rail and road transport. Therefore, increase in the share of coastal transport in the model mix of the country will lead to reduction in pollution caused by the logistics sector in the country. Sir, presently, regulation and licensing of coastal shipping is governed by the Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958, which applies only to mechanized vessels. However, it does not provide a holistic or forward-looking framework suited to today's commercial realities in line with globally prevalent cabotage practices. Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958 is overshadowed by its primary focus only on providing licensing of Indian and foreign vessels for coasting trade in India. The result is regulatory gaps and procedural limitations that do not focus on development of coastal shipping sector in the country. As the current provision under Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958 have not led to desirable growth in the coastal shipping sector. Hence, a need was felt to give due weight to statutory provision related to the coastal shipping sector for dedicated focus on the growth. It is thus necessary to enact a separate legislation that consolidates, updates and simplifies the coastal shipping framework in line with the needs of a modern logistic economy and the global best practices. Madam, the Coastal Shipping Bill 2024 is designed to do exactly that, to make coastal trade easier, more competitive and better integrated with India's overall transport vision. Madam, this bill introduces several forward-looking provisions. Chapter 1, 2 clauses consist of provisions on commencement and definition for the bill. Chapter 2, 5 clauses deal with provision regarding licensing and regulation of foreign vessels participating in coastal trade of India. Chapter 3, 2 clauses provide for formulation of the National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan and creation of a national database for coastal shipping. Chapter 4, 5 clauses provide for licensing and regulation of foreign vessels chartered by Indian entities. Chapter 5, 19 clauses consist of penalties and offences for any contraventions of the provisions of the bill. The provisions related to penalties are in line with the central government goal of decriminalization of law. Chapter 6, 9 clauses consist of provisions regarding power of DG Shipping to seek information, issue direction, central government power to issue direction and provide exemption, among others. With respect to the key provisions of the bill, first and foremost, it does away with the requirement of a general trading license for Indian ship to engage in the coastal trade, that is clause 3. This step will significantly reduce compliance burden and promote ease of doing business for Indian shipping companies, which is in line with the Government of India's mission of enabling ease of doing business. Secondly, Madam, the bill provides that the foreign vessels may only participate in India's coastal trade under a license issued by the Director General of Shipping, clause 4, and allows the imposition of statutory conditions on such licenses. This may include crewing requirement or stipulation that part of the vessel be built in India. This will not only support Indian shipyard and generate employment for Indian seafarers, but also protect our long-term strategic maritime interests. Madam, importantly, the bill mandates the preparation of a
National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan, Clause 8, to be revised every 2 years. This will assess the condition of shipping routes, forecast future traffic, identify areas for improvement, and promote synergy with inland waterways. The plan being formulated under Clause 8 is rightly referred to as a strategic plan because it will provide the long-term vision and determine the roadmap to achieve the goal specified in the preamble of the bill. Further, the integration of coastal and inland waterways will promote regional development of riverine and coastal areas alike in the country. This bill will also give impetus to the long-term vision of development of coastal and inland waterways transport in states such as Odisha, Karnataka, and Goa, among others. Another major step is the creation of a national database of coastal shipping, that is in Clause 9, containing details of the license issued, road use, vessel involved, and other key information. This will bring transparency, enhance coordination, enable data-driven and timely decision-making for regulators, shipping companies, and the broader logistic ecosystem. Additionally, the bill also provides for licensing of foreign vessels chartered by citizens of India, NRI, OCI, LLPs, as well as any other Indian entity as may be specified by the central government. That is Clause 11. This provision expands the category of charterers who can charter a foreign vessel in India. Respected Madam, a concern often raised about central legislation is whether they undermine the rule of state. I want to assure this House that the Coastal Shipping Bill 2024 is firmly grounded in the spirit of cooperative federalism. Far from centralizing powers, the bill provides for active representation of state and union territories in key institutional mechanisms. Under Clause 8.3, a committee to be constituted to prepare the National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan. This committee will include representatives from every major ports, all state maritime boards, and other experts. This ensures that the state will not only be consulted, but will actively shape the strategy, route, regulatory approaches for coastal shipping. Such an approach will help align national policy with local priorities and unlock region-specific opportunities. Furthermore, the integration of coastal shipping routes with inland waterways, which often traverse multiple states, call for collective planning and coordinated execution. By recognizing the role of state in this regard, this bill ensures that the growth of coastal shipping is inclusive, participative, and aligned with the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas. Respected Madam, the proposed law built on the strong foundation laid by this government over the last decades, including prioritized berthing for coastal vessels, grain clearance channel, GST reduction on bunker fuel, and the right of first refusal scheme for Indian-built vessels. The result is visible. This is a very significant. Because of the adopting this kind of initiative, the result is visible. Coastal cargo traffic has grown by 119% over the last 10 years, rising from 74 million metric ton in 2014-15 and to over 162 million metric ton in 23-24. We now aim to grow this further to 230 million metric ton by 2030. To support this aspiration, we need legal clarity, regulatory stability, and investment-friendly rules, and that is exactly that this bill delivers. Internationally too, countries as the United States, Australia, and the European Union have adopted dedicated laws for coastal trade. This provision in this bill reflects the best of those practices adopted to suit Indian conditions. Madam, this bill is the outcome of consultation with stakeholders across the maritime sector. In addition to interministerial consultation, input were also received from
several private stakeholders. In conclusion, this legislation is timely, necessary and forward-looking. It will reduce logistic costs. What is the merit of particular this initiative, this particular bill? It will reduce logistic costs, promote green transport, support Make in India and create thousands of jobs in shipbuilding, port services and manning of vessels. The overarching goal of the bill to develop a coastal fleet owned and operated by Indian entities will lead to reduce dependence on foreign vessels for critical areas relevant for our country's coastal shipping. Since coastal shipping is highly significant for movement of critical cargo, including food grains and fertilizer, greater number of Indian ships handling coastal cargo provides supply chain security and prevent escapement of revenue forex to foreign owners and enables a burgeoning local economy in terms of job, shipbuilding and the likes. These goals are in line with the broad mission of self-reliance as envisaged in creating Atmanirbhar Bharat. Further, increasing the number of Indian fleet in coastal shipping and statutory regulation of foreign vessels operating in our coastal water is critical for ensuring our national and maritime security too. Hence, this bill has well accounted for the same. It aligns local aspiration with national goals and provides a framework for the next 25 years of coastal economic growth under the Maritime Amritkal Vision 2047. I urge honourable members to support this bill and help lay a strong modern foundation for India's maritime future. Thank you. माननीय सदस्य श्री मणिकम टैगोर जी. Thank you, Madam Speaker. Respected colleagues and friends of the House, I rise today from Virudhunagar, a town far from the sea's call. Yet I speak the heartbeat of India's fishermen pulsing through me. From the India's Tamil Nadu's Park Bay to Gujarat Kutch, from Kerala's shores to Odisha's delta, their voices unite us. As a member of Indian National Congress, a party born out of freedom's fire, I open this debate not just as on the Coastal Shipping Bill 2024, but on the legacy and the stretches back on thousand years to the Cholas, whose ships ruled the seas, to VOC Pillai, who defied empires, and the East India Company, to the fishermen of today, betrayed by neglect and greed. This bill promises a maritime revival, Indian vessels in our waters, trade unleashed, ports reborn. From Madurai's blustering markets, I see its spark, goods flowing to Chennai's docks, prosperity weaving inland to shore. But, Honourable Ma'am, where is the fisherman in the tale? The man whose boat braves the dawn, whose net feeds our homes. Our history whispers their warmth. A millennium ago, the Cholas, masters of Tamil Nadu, built a naval empire that sailed through Tamil Nadu to Southeast Asia. Rajendra Cholan, in 1025, sent fleets of wooden ships, some say hundreds strong, to conquer now in Indonesia, Sri Vijaya. Their shipyards in Nagapattinam crafted vessels of teak and skill. Their miners mapped the Bay of Bengal. Their trade spanned China to Arabia. The Cholas did not just fish. They commanded the seas as a legacy enriched to our blood. Centuries later, VOC Chidambaram Pillai, VOC the Kapalotiya Tamilan, revived that spirit. Born in 1872, he launched the Swadeshi Steam Navigation Company in 1906, India's first indigenous shipping line, with ships like SS Gallia and SS Lava plying Tuticorin to Colombo. Against the British might, he raised funds from every corner, vowing, "I'll return with ships or perish in this sea." They jailed him, broke him on the oil press,
but his dreams endured. Today, this bill would echo the Cholas and VOCs, lifting our fishermen, honor our maritime soul. Instead, it drifts past them, mute on their safety, their stake, and their future. Let me widen this canvas, ma'am. For the fishermen's fight is India's fight. In Tamil Nadu, 843 fishermen have fallen to the Sri Lankan guns and jails in the past years. Boats seized, families shattered. In Gujarat, Pakistan looms. In Odisha, cyclones range. In Andhra, pollution poisons. Over 1 million fishermen, 70,000 households in Tamil Nadu alone scrapped by less than 24,000 rupees a year. And now, in a new tide rises, the Prime Minister's favorite ports company in Villingam, where Kerala fishermen blockade Adani's 7,525 crore project. 600 displaced, beaches lost, fishes vanish as groins and dredges choke the coast. In Diggi, Maharashtra and Gangavaram, Andhra Pradesh, the same company's expansions turn fishers into strikers and laborers. Their seas sold. This bill's vast powers to the Director General to this government would favor such giants over our fishers. The Congress party demands justice. Honorable Madam, as the Cholas ruled with strength, VOC fought with courage. First, safety modern boats, weather alerts, life vest for every fisherman from Kanyakumari to Puri. Not words, but law. Second, ma'am, livelihood. Certify their boats for trade under this bill. Train them as the Cholas trained their navy. Scrap 30% wage tax. Foreign crews escaped. Third, ma'am, diplomacy. End Sri Lanka and Pakistani assaults. Free our boats. Show Cholas bravery, not cowards. Fourth, ma'am, environment, curb pollution, climate change, and probe the Prime Minister's favorite ports. Are they eroding our coast, starving our fish? We need independent studies, not corporate tales, ma'am. The Cholas built empires on the sea. VOC built deviance. Yet today, this government props up Adani while fishermen sink. Villingam delays, cyclones, granite storages, costs Kerala's crores. Yet, the company thrives. Gangavaram's coal stalls over fishermen strikes, but who hears? In 2021, fishers rejected the marine fisheries bill for its fines and neglect. Now they distrust this bill, seeing Adani's hands where Chola and VOC would be. The Congress party, which freed the nation, says consult them, form a committee, MPs from every coastal state, to rewrite this bill with our ancestors' vision. A shield for fishers, not a sword for typhoons. From Virudhunagar, I see this trend in view. Fish from Nagapattinam feeds my people. We fought for fireworks laborers when lives were attacked. Now we fight for fishers when ports and policies are threatened. This government must act not with slogans but with solutions, ma'am. Fund Sagarmala fully, not faintly. Build ports as Cholas did, not burdens them. Free our fishers, not foreign fleas or Modiji's favorite companies' ambitions. Let this bill be tide that lifts all, a tribute to the Cholas ships, VOC's sacrifice and fishermen's sweat. I stand with this, Honorable Ma'am, with a challenge. Make this house the fisherman's voice. The Cholas echo, VOC's cry, from the island to ocean, we are one. The sea is vast, but our resolve, forged by history giants, must be vaster. Let us begin. Thank you, ma'am. माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। जय श्री राम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 लोकसभा में 2 दिसंबर 24 को पेश किया गया था। इस बिल का मकसद भारत के कोस्टल ट्रेड को बढ़ाना तथा भारतीय ध्वजवाहक समुद्री जहाज़ों को
बिना किसी बड़ी फॉर्मेलिटी या लाइसेंस के कोस्टल ट्रेड की परमिशन देना है। अभी कोस्टल शिपिंग में विदेशियों का वर्चस्व है। 2005 में यूपीए सरकार ने जब देश के पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच व्यापार के लिए रास्ता छोटा करना चाहा, राम सेतु को तोड़ने की साजिश की, तब पूरे देश का ध्यान कोस्टल शिपिंग और यूपीए सरकार द्वारा भगवान श्री राम को काल्पनिक बताने की ओर गया था। तत्कालीन संस्कृति मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी द्वारा भगवान राम को काल्पनिक बताने का एफिडेविट देने पर पूरे देश में यूपीए सरकार की घोर निंदा हुई और उन्हें वो एफिडेविट वापस लेना पड़ा। भारी जनविरोध के कारण तत्काल यूपीए सरकार राम सेतु को तोड़ नहीं पाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2014 में राम सेतु तोड़ने की परियोजना को पूरी तरह खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री जी के इस आश्वासन पर पूरे देश की धर्मपरायण जनता ने चैन की सांस ली। वास्तव में केंद्र सरकार की तेज निगाह से तटीय व्यापार भी छूटा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2023 का मुंबई में उद्घाटन करने के साथ समुद्री क्षेत्र में इंटरनेशनल व नेशनल भागीदारी के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्टों का उद्घाटन करके देश को समर्पित किए तथा 2047 तक भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश की घोषणा की। जनवरी 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोची में भाषण देते हुए कहा, जब भारत समृद्ध था तब भारत की असली ताकत उसके बंदरगाह व पोर्ट सिटी ही थे। आज भारत वैश्विक व्यापार का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है और हम समुद्री ताकत बढ़ाने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इस बिल से भारत की सुरक्षा और व्यापारिक आवश्यकताओं को देखते हुए भारतीय नागरिकों के मालिकाना अधिकार वाले शिप कोस्टल शिपिंग में हेल्प करेंगे। भारत सरकार के पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने कोस्टल शिपिंग के लिए इस युगांतरकारी बिल को लोकसभा में पेश किया है। इस बिल में भारत की जल सीमा में इंडियन ओनरशिप के जहाजों को छोड़कर बिना लाइसेंस शिपिंग करने वाले दूसरे शिप्स को रोकने का प्रावधान है और भारतीय जहाजों को कुछ नियमों के साथ व्यापार की अनुमति इस बिल के जरिए दी जा रही है। शिपिंग के डायरेक्टर जनरल किसी भी शिप को भारतीय समुद्री सीमा में काम करने की अनुमति तभी देंगे जब वो उस शिप पर काम करने वाले लोगों की नागरिकता सुनिश्चित कर लेंगे या फिर यह कि वो जहाज भारत में बना हुआ होना चाहिए। इस प्रकार इस क्षेत्र में भारतीय लोगों के लिए नौकरी की बड़ी संभावनाएं पैदा होंगी और भारत में शिप बिल्डिंग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस बिल के जरिए कोस्टल शिपिंग के विकास एवं वृद्धि के लिए नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रैटेजिक प्लान तैयार करने की भी योजना है। इस बिल को इसलिए भी न्याय संगत कहा जा सकता है कि बिल के अनुसार किसी भी लाइसेंस को सस्पेंड, कैंसिल अथवा संशोधित नहीं किया जाएगा जब तक दूसरी पार्टी को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर न दिया जाए। भारत में कोस्टल शिपिंग की अपार संभावनाएं हैं क्योंकि भारत की जो कोस्टल लाइन है वो लगभग 7,500 किलोमीटर की है और ये कोस्ट लाइन दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जलमार्गों के नजदीक है। हमारी कोस्ट लाइन से जहां एक और मॉरिशस, अरब, अफ्रीका, यूरोप इत्यादि देशों को और क्षेत्रों को व्यापार किया जा सकता है, वहीं अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है। भारत को अपनी लंबी कोस्ट लाइन का एक बड़ा लाभ यह भी है कि कोस्टल शिपिंग के जरिए व्यापार करना व्यापार के दूसरे साधनों के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन के कारण अगर बंगाल से केरल तक माल ले जाना है तो कोस्टल शिपिंग उसमें बहुत अधिक सहायक है। इसी तरह यदि केरल से गुजरात तक माल पहुंचना है तो उसके लिए शिपिंग सबसे सस्ता जरिया है। वास्तव में कोस्टल शिपिंग भारी कार्गो को एक समुद्री तट से दूसरे समुद्री तट तक ले जाने में बेहद सहायक है और एक कोस्ट लाइन से 20 नॉटिकल मील तक कोस्टल शिपिंग मानी जाती है। कोस्टल शिपिंग देश के प्रमुख बंदरगाहों के बीच जहां व्यापार में सहायक है, वहीं कोस्टल शिपिंग के जरिए कंटेनर, बड़े साइज का कार्गो, ट्रक, सेमी ट्रेलर, कार, अनाज, फर्टिलाइजर, स्टील, कोयला, नमक, पत्थर, स्क्रैप, मिनरल्स सभी को कम दाम में परिवहन करता है। कोस्टल शिपिंग का एक और बहुत बड़ा लाभ यह है कि जहां सड़क परिवहन से प्रदूषण फैलता है, वहीं कोस्टल शिपिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इस बिल के पास होने से परिस्थितियां भारतीय शिपिंग कंपनियों के पक्ष में बदलेंगी, रेड टेपिज्म कम होगा, स्थानीय व विदेशी व्यापार में भारतीय शिपिंग कंपनियों की भागीदारी बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय ध्वजवाहक शिपिंग कंपनियों को कोस्टल शिपिंग में लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी। इस बिल का उद्देश्य घरेलू शिपिंग कंपनियों की नौ परिवहन में भागीदारी व रोजगार बढ़ाना है। ये एक राष्ट्र हित का उद्देश्य है, अतः मैं इस बिल का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। जय श्री राम।
माननीय सदस्य श्री नरेश चंद्र उत्तम पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत हूँ। ये विधेयक अच्छे इरादों की बात करता है, लेकिन इसमें कई खामियां हैं जो हमारे देश के हितों को नजरअंदाज करती हैं। मैं मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहता हूं। ये विधेयक सारी शक्ति केंद्र के हाथों में देता है। शिपिंग महानिदेशक को लाइसेंस और नियम बनाने का अधिकार देना राज्यों की भूमिका को कम करता है। तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल जैसे तटीय राज्य इस विधेयक में अपनी आवाज खो रहे हैं। क्या ये संघवाद का सम्मान है? हम मांग करते हैं कि राज्यों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए। सरकार कहती है कि ये विधेयक रोजगार बढ़ाएगा, लेकिन ये बड़े कारपोरेट्स को फायदा पहुंचाने वाला है, ना कि मछुआरों या छोटे जहाज मालिकों को। मानवर 2001 में सिर्फ एक बड़े बंदरगाह मुंद्रा से अडानी समूह आज सबसे बड़ा निजी ऑपरेटर बन गया है, जिसके पास 14 बंदरगाह और टर्मिनल हैं, जो देश के बंदरगाहों से गुजरने वाले सभी कार्गो का 1/4 हिस्सा संभालते हैं। औसतन हर 500 किलोमीटर तट पर एक अडानी बंदरगाह है। ये अभूतपूर्व विस्तार, जिसका ज्यादातर हिस्सा अधिग्रहणों के जरिए हुआ है, पिछले 10 सालों में ये चिंता का विषय है। उसके बाद के एक बंदरगाह खरीदने की अनुमति क्यों दी जा रही है? कुछ मामलों में तो पिछले मालिकों पर छापे के बाद और इसके गंभीर सुरक्षा निहितार्थों के बारे में विचार किए बिना सितंबर 2000 में गुजरात के मुंद्रा स्पोर्ट पर 3000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। मानवर अगर विदेशी कंपनियों को अधिक अधिकार मिलते हैं तो असमानता बढ़ेगी। क्या गरीब तटीय समुदायों के लिए कोई ठोस योजना है? हमें समावेशी विकास चाहिए, ना कि चुनिंदा लाभ। 2001 में सिर्फ एक बड़े बंदरगाह मुंद्रा में अडानी समूह आज सबसे बड़ा निजी ऑपरेटर बन गया है, जिसके पास 14 बंदरगाह और टर्मिनल हैं, जो देश के बंदरगाहों से गुजरने वाले सभी कार्गो का 1/4 हिस्सा है। हमारी तट रेखा सुंदरबन से लेकर पश्चिमी तट तक संवेदनशील है, लेकिन यह विधेयक प्रदूषण रोकने के लिए सख्त नियम नहीं लाता है। जहाजों से होने वाले उत्सर्जन और कचरे पर निगरानी का कोई प्राविधान नहीं है। मानवर, क्या हम व्यापार के लिए अपनी प्रकृति को दांव पर लगाएंगे? पर्यावरण सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। मानवर, शिपिंग महानिदेशक को इतनी शक्ति देना नौकरशाही को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय डेटा बेस की बात तो हो रही है, लेकिन डेटा गोपनीयता का क्या? ये विधेयक पारदर्शिता के बजाय अस्पष्टता लाता है। हम संसदीय निगरानी और जन परामर्श की मांग करते हैं ताकि जनता की आवाज सुनी जाए। अंत में ये विधेयक बुनियादी ढांचे की कमियों को नजरअंदाज करता है। बंदरगाहों में सुविधाएं नहीं हैं, अंतर्देशीय संपर्क कमजोर हैं। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग की हालत देखिए, गाद कम गहराई और टर्मिनलों की कमी इसे बेकार बनाती है। बिना गंगा जैसे जलमार्गों को ठीक किए तटीय नौवहन से जोड़े ये विधेयक सिर्फ कागजी वादा है। सरकार को निवेश करना होगा, न कि सिर्फ कानून बनाना। मानवर, मेरा जिला फतेहपुर गंगा यमुना के बीच में स्थित है। मेरे गृह जनपद में बहुत झीलें हैं। अखनई जैसी झील है जो अंतिम सांस ले रही है। इस झील की परिधि 7 किलोमीटर है, जो नैनीताल झील से भी अधिक है। इस झील में ससुर खरेदी नदी निकलती है, जो यमुना की सहायक नदी है, और यमुना अंततः गंगा की सहायक नदी है। फतेहपुर में इसके अतिरिक्त कई अन्य झीलें हैं, जिनके पुनरुद्धार की तत्काल आवश्यकता है। मेरी सरकार से मांग है कि इन झीलों के पुनरुद्धार हेतु नमामि गंगे योजना के तहत
विशेष परियोजना लागू की जाए। मानवर अभी सदन में मछुआरों की दयनीय स्थिति पर चर्चा हो रही थी। मानवर मेरे जिले में गंगा जमुना के किनारे मछुआरे बहुत बड़ी तादाद पर रहते हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार में उन मछुआरों की जीविका पर पूरा कुठाराघात किया गया है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मछुआरों को आवास दिए गए, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में उनको तालाब के पट्टे दिए गए, गंगा यमुना के किनारे मछली मारने के उनको ठेके दिए गए, लेकिन आज मानवर उस डबल इंजन की सरकार में मेरे जनपद में माफिया हावी है। वो खनन से लेकर मानवर मछली के ठेके सब इकट्ठा कर लेते हैं, जो लगातार मछुआरों को पेट में लात मार रहे हैं। मानवर इस जो विधेयक है, मैं ये विधेयक केंद्रीकृत, कारपोरेट हितैषी और अधूरा है। हम संशोधन चाहते हैं। राज्यों की भागीदारी, पर्यावरण सुरक्षा और छोटे ऑपरेटरों के लिए समर्थन सुनिश्चित, ये देश का भविष्य है, इसे हल्के में न लिया जाए। माननीय, मेरी कुछ मांगे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार के सामने वो बात कहना चाहता हूं कि भारतीय शिपिंग कंपनियों को प्राथमिकता दी जाए, विदेशी कंपनियों को सीमित छूट मिले, तटीय राज्यों को इस विधेयक के निर्माण में परामर्श और भागीदारी का अधिकार मिले, भारतीय मछुआरों और समुद्री श्रमिकों की सुरक्षा के लिए ठोस प्राविधान जोड़े जाएं, राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विदेशी जहाजों के प्रवेश और गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए, पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में सख्त प्राविधान जोड़े जाएं। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये विधेयक भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे बिना जरूरी सुधारों के लागू करना आत्मघाती साबित होगा। हमारी मांग है कि सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करे और इसमें भारतीय हितों को प्राथमिकता दी जाए, अन्यथा ये विधेयक भारत के तटीय व्यापार और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनेगा। इन शब्दों के साथ मानवर आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सदस्य श्री सौगत राय जी। Thank you, Madam. I rise to speak on the Coastal Shipping Bill 2024 brought forward by the Shipping Minister Sarbanam Sonowal. Madam, coastal shipping is a huge area. It covers 7,500 kilometers of our coast. Problem with our coast is that we have a long coastline, but it is not indented. If you compare it with Scandinavian coast, there are indentation so that ships can go straight into the harbor. We don't have that facility, but we have to make do what we have. Now, the main thing is that coastal shipping is cheaper. For instance, you are from Madhya Pradesh, you wouldn't realize we have a problem with Calcutta. From Calcutta to Chennai, we can carry coal very easily, easier than train or truck. And this was very prevalent. The minister wants to improve that. But at present, waterways account only 6.4% of our transport mix, much lower than countries like China, Japan, and the EU. The bill seeks to increase the share to 7.5% by 2030 and 12% by 2047, reducing congestion on roads and railways. The minister has done some work on improving inland river connectivity.
mainly our national waterways are there, Ganga, Brahmaputra, and other places. Madam, you would be surprised to know that from Kolkata port, there are ships going to Kachar. How they go? They go down Ganges to the sea. Then from Bangladesh, they go up Brahmaputra to reach Kachar. There is a regular trip to Karimganj from Kolkata. Now, these are great advantages. There is no traffic jam on waterways, and the cost is less. But one thing, if we improve our coastal shipping, it will enhance India's marine competitiveness. Though 100% FDI is allowed in the shipping sector, complex regulations have hindered foreign investment so far. We must not allow regulations to hamper investment. This bill introduces uniformity and transparency, encouraging more ships to register in India and boosting maritime trade. Madam, you possibly know that there are mechanized vessels and non-mechanized vessels. For instance, if you take a barge, huge barge, going by the Ganges or going into Bangladesh, it is a non-mechanized vessel. If you look at the huge oil platforms through which we raise oil from Bombay High, they are also non-mechanized. Mechanized are those which use an engine. The engine may be petrol engine, but it is better to have a CNG engine. That will improve our marine competitiveness. This is one suggestion that we have. And we should have a provision in clause 3 requiring at least 50% of India's domestic cargo to be transported by Indian flagged vessels. In this house, a few days ago, I mentioned that we have not given attention to the shipping sector. Mr. Sonowal, as a minister, is giving attention to the shipping sector. He is trying to improve both inland, coastal, and high seas ship transportation. That is a big way of improving our situation. Madam, the bill mandates the creation of a national coastal and inland shipping strategic plan within 2 years of the commencement of the Act. But one requirement is that we must not depend wholly on the Director General of Shipping. Director General of Shipping is the highest, biggest bureaucrat in the shipping ministry after the Secretary. We must create an independent body to look after shipping matters instead of giving it to a single Director General of Shipping. Madam, there is a big problem of Indian seafarers or sailors finding jobs. The government should mandate a minimum quota of Indian seafarers in Indian flagged vessels. We should give more encouragement to the shipping companies that employ Indian seafarers through tax rebates. Lastly, Madam, the new National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan
should be implemented in a hurry. Madam, from ancient times, ships have opened up India's doors. You know, in the 15th century, Vasco da Gama came from Portugal to Indian ships. But even before that, Samrat Ashok sent his children to the Southeast Asia. Shivaji had a fleet. Kanoji Angre was Shivaji's admiral. And Vijay, finest navy. Madam, also the Vijayanagar kings, they also Cholas, they also had fleets. So I would ask the shipping minister that he has got straight 4 years till the next election. So he should show some result in this Andhra Pradesh, having the second largest coastline in the country, will benefit from the bill. So will Maharashtra, which has got a big coastal line. So I don't want to prolong my speech. Bills should not be introduced only to establish or force regulations. There are too many regulations. You get a punishment because of this, you have to pay so much. No, bills or laws should be there to encourage shipping. And I would like this Indian shipping to benefit totally from this bill. I look forward to Kolkata benefiting because Kolkata has a long time, though it is inland, ships go out from Kolkata to Chennai, to Bangladesh, and it will benefit very much if the shipping is improved. With this word, I have nothing to oppose in the bill. I have made some suggestions. I thank the Minister. Thank you. माननीय सदस्य श्री कातेर आनंद जी। வணக்கம் chairperson அவர்களே, esteemed members of this house, I stand before you today not merely as a representative but as a voice of Tamil Nadu, a state wronged by the Coastal Bill 2024. This legislation, draped in the garb of modernization, is an insult to our maritime legacy, a betrayal of our economic aspirations, and a dagger aimed at the heart of our coastal communities. Tamil Nadu, with its 1,076 kilometers of coastline, its bustling ports, and its indefatigable people, deserves better than its half-baked central-centric travesty. Let me tap through this facade and demand a justice for my state, madam. First, this bill dares to dangle the carrot of ease of doing business by scrapping licenses for Indian flag vessels. A fine idea. If we ignore the stark of reality of Tamil Nadu, our shipyards are shadows of what they could be. Our ports grown under decades of neglect, and our shipping firms struggle to compete. Where are the ships were meant to flag? Madam, Gujarat may boast about its maritime might, but Tamil Nadu languishes without the infrastructure to claim this so-called benefit. And yet, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister Tamil Nadu, Sri M.K. Stalin, he has fought to rise above apathy, pushing for port expansions at Tuticorin, modernizing Chennai, and dreaming of shipbuilding hub in our state, madam. Why then this bill offer us crumbs while others feast? We demand funding
not empty promises. Madam, the bill's grant talk of integrating our inland waterways with coastal shipping is a cruel joke for Tamil Nadu, madam. The Buckingham Canal, once a jewel of our trade network, lies choked, abandoned, a victim of central indifferences. Our Chief Minister has tirelessly championed its revival, allocating funds and drafting plans to link it to our ports. Yet, this bill offers no support, no commitment, just vague platitudes about coordination. Why must Tamil Nadu beg for what other states are handed? We will not be silenced while the center dreams of rivers that we do not have. Restore our waterways or admit this bill is a sham. Third, madam, the National Coastal and Inland Shipping Strategy Plan is a slap in the face of the state autonomy. Every 2 years, center will dictate our maritime fate as if Tamil Nadu needs can be scribbled on our bureaucrats' notepad. Our minor ports need dredging. Our fishing harbors need protection. Our industries need connectivity. Yet this bill chains us to centralized leash. Our Chief Minister has shown the way, fostering maritime growth with initiatives like Tamil Nadu Maritime Board and Coastal Economic Zones. Why should his efforts be shackled by a plan that ignores our voice? We demand co-ownership of this strategy, not subversive to it. Fourth, madam, the environmental stakes of this bill are a ticking time bomb for Tamil Nadu. Our Gulf of Mannar, our Palak Bay, these are not just waters, they are our lifeblood. Cradling biodiversity found nowhere else, madam. Increased shipping spurred by this bill promises oil spills, pollution and ruin for our fishermen. The Ennur disaster still haunts us. Oil-stained shores, poisoned fish, broken livelihoods, yet enforcement failed us. Fines of 15 lakhs, a pittance when our ecosystem hangs in balance. Our Chief Minister had stood firm, enforcing green norms and pushing for the sustainable ports. This bill must match his resolve with ironclad safeguards or its death sentence for our coast, madam. Finally, the bill's content for our small-scale operators is unforgivable. Tamil Nadu's maritime soul beats in the catamarans and mechanized boats of our 1.2 million fisher folks and traders. They are not footnotes. They are our backbone. Yet this bill fixates on grand vessels, leaving our small operators to drown in red tape and cost they cannot bear, madam. Our Chief Minister has uplifted them with subsidies, training and harbour upgrades. Efforts this bill ignores. We will not let you crush the very people who sustain us. Amend this bill to protect them or face our wrath, madam. Honourable members, Tamil Nadu is not a beggar at the table of progress. We are a titan demanding our due. Our Chief Minister has lit the path, expanding Tuticorin's capacity, greening our ports and dreaming of a maritime renaissance. But this bill dims that light with its neglect, its arrogance, its blindness. I say to the House, rewrite it, fund our ports, revive our waterways, respect our autonomy, shield our environment and honor our small operators. Anything less is affront to Tamil Nadu's pride, a mockery of our Chief Minister's toil and a betrayal of our Tamil Nadu people. We will not bow, we will not break. Give us justice or prepare for the roar. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री लाभू श्री कृष्णा जी। Thank you, ma'am, for allowing me to speak on this bill. I stand in support of Coastal Shipping Bill 2024, ma'am. Ma'am, we have a great history of seafaring, trading, and maritime, ma'am. As Dada has just mentioned earlier, from medieval times, we were trading with all the way from mainland Europe to Japan, ma'am. And also, our shipbuilding has been one of the world class until the time British have arrived into the country, ma'am. So we had great history in maritime. But somehow, in the last few centuries or so, we have really fallen behind. And recently, we have been so far behind with regards to the logistics costs that India is bearing.
When we look at logistics cost that India does have on par with the GDP, we have almost 13 to 14% of the cost that we have to pay for the logistics, whereas the global average is around 8 to 9%. So this is actually hampering the MSMEs, the manufacturing sector that is there in India. So to bring down this logistics cost, this bill is definitely very much needed, ma'am. And also the second reason that this bill is needed is with regards to the only 6.4% of the transport mix across the country that is happening with the waterways, either inland waterways or outside in the ocean as well. So this is very less when compared to the world average. So this bill is very much necessary to increase this transport mix so that more goods can be transported, ma'am. And also the third reason that this bill is very much needed is with regards to there's a provision for the 100% FDI that can be brought into this sector, ma'am. Unlike aviation sector, unlike the national highway sector, where when the FDI was allowed, it was very much well taken up, and most of the projects are being funded, ma'am. But somehow, because of a lot of bureaucracy that is involved in this sector, this 100% FDI, even though it is allowed, it is not being taken into the account, ma'am. So this bill is very much needed for encouraging this. Coming to the suggestion that I want to make, there's 3 suggestions, ma'am. The first one being, I think Dada has already mentioned about this, that 50% of the Indian domestic cargo has to be mandated so that they can be transported via Indian flagged vessels. Example, China does that, wherein the China flagged vessels will have a mandatory condition that some percentage of the cargo has to be taken care of by the Chinese flagged vessels. So I hope the minister will take this into account. The second suggestion is with regards to there's a lot of Indian seafarers that are doing a lot of good work, not only in Indian vessels, but the vessels outside the country also. So mandate the minimum quota for these Indian seafarers so that they can get better jobs on Indian vessels. The third suggestion I want to make is with regards to there is a 49% of Indian coastal fleet, which is almost 20 years old or more than 20 years old. So the requirement that these people are asking is to provide low-cost capital and long-term financing so that because the shipbuilding as a whole, as an industry, it needs to be developed. We don't have a Indian shipping vessel fleet that when compared to even the small countries like France and Italy, they have their own shipping liners, but somehow India doesn't have it. Even China has it as a big nation. So I think we need to look into direction. For that to happen, this low cost and long-term financing is the need of the hour. I hope the minister will take this into account. Coming to the Andhra Pradesh, when we have to talk about the shipping bill, we have to talk about Andhra Pradesh, ma'am, because we have one of the longest coastal line of 1,000 kilometers, and we have the 3 major ports and 12 non-major ports as well, ma'am. We have been coming on board with regards to by becoming a hub for the shipbuilding and maritime trade. And our Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu Garu recently, I don't know if any other state have announced it, but in Andhra Pradesh there is a maritime policy that has been announced only 3 months back, because we understand the need of this industry, the need to develop this industry, so we have announced this policy. So because of this, there are 5 shipbuilding and ship repair clusters that Union government has announced, and 1 is coming to Andhra Pradesh. I thank the minister for sanctioning this. I thank the Prime Minister also for sanctioning this, ma'am. But on top of this, on top of allocating this shipbuilding and ship repair cluster, what I request is there's a Buckingham Canal that goes that's there from last 100 and 150 years that goes via my district of Guntur all the way to Chennai, which will reduce the shipping cost and maritime cost. We have a lot of coastal line, lot of ports, ma'am. But at the same time, if there is a inland shipping process also with this Buckingham Canal, I think that will actually bring down the logistics costs I've mentioned earlier. So I request the Honourable Minister to look into this. And last 2 points, ma'am, that this sector needs to be developed. That's why we brought in Andhra Pradesh, brought in the maritime policy. But for this sector to develop, there are 2 things that needs to be kept in mind. One is robust security mechanism that has to be there, and there's a urgent need of safeguarding the port assets. Why I'm telling you, ma'am, there's robust security mechanism, because the one example I can give you is Visakhapatnam port. There's an incident that happened in the last year around February, March, ma'am, wherein there's a shipping container that have come from Brazil to Andhra Pradesh. They've imported seafood, ma'am, so that seafood for some industry related to the shrimp industry, ma'am. They imported the seafood. Somehow that Interpol has sent a message saying there is a cocaine that has been coming in.
And because someone has alerted the container that has come into the Vizag port, it has been stopped. Okay, they stopped it. I understand that. But there's a process, due process that needs to be followed. Maybe take 10 days, take 20 days, take 1 month. But the whole process extended by 9 months to clear that there's no cocaine that is being transported in that shipping container. If the process takes 9 months, ma'am, imagine if someone has to come and invest in the sector in India. So how will they be encouraged when this whole process can take 9 months? Eventually, I have to say it in the House, even my name was dragged into that incident. My name was that somehow it is associated or something, but eventually there's nothing that has been found. But why I'm telling this example is 9 months of clearing a small issue doesn't sound well when we are asking for FDI to come in, 100% FDI to come in. So I request the minister to look into this issue. Second issue, ma'am, with regards to the Karnataka port. Karnataka port, my fellow MP is also sitting here, and I'm mentioning this issue because we need to safeguard the port assets. Because I'll give you an example of what has happened. There was, in the previous government, what has happened was this Karnataka port, which was valued around 2,500 crores for the 40% stake. It has been taken by force by 494 crores. Whereas where it is owned by 2,500 crores, it has been taken out for 494 crores. Ma'am, this might happen, this will happen, this might happen, maybe in the inside trading or whatever it is, ma'am. But the problem, the crux of the problem here is the maritime trade gets affected. Whatever the goods that has to be transported from this port gets hampered because of this non-protection of the port assets, ma'am. So I request the minister to actually look into how these transactions are being done so that there is some transparency. Because as a country, we also don't want to lose any of this. Whenever this transaction happens, there is some income that the government gets, either central government or the state government also gets. Definitely, there are so many people that are involved. There are so many employees that are involved in the port, working in this port. They also get affected. So I request the minister to look at it. When we are looking for 100% FDI to come in, when we want the whole thing to be streamlined and much more process-driven, I request the minister to look into issues with regards to the security as well as safeguarding of the port assets, ma'am. With this observation, I support this bill wholeheartedly, ma'am. Thank you. माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सुमन जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज मुझे द कोस्टल शिपिंग बिल 2024 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे देश में 7,500 किलोमीटर का समुद्री किनारा माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही के लिए शामिल है और यह समुद्री किनारा विश्व में विभिन्न देशों के लिए माल ढुलाई में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है महोदया, जो देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी भी है। यह भी देखा गया है कि समुद्र के रास्ते से माल ढुलाई आसान ही नहीं है बल्कि सस्ता भी है। महोदया, द कोस्टल शिपिंग बिल 2024 लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा मिले, समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिले तथा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो। हमारे पुराने कानून जैसा कि द कोस्टिंग वेसल एक्ट 1838 और द मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में एक रूपता का अभाव था। यह भी जरूरी है कि हम इस नए विधेयक में सेफ्टी, सिक्योरिटी और पोल्यूशन जैसे विषयों को भी एड्रेस करें। वर्तमान विधेयक पास होने से लाइसेंस रिक्वायरमेंट सिंपल होगा तथा इंडियन फ्लैग वाले जहाजों की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय जहाजों को तटीय शिपिंग में भाग लेने का अधिक मौका मिलेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। महोदया, तटीय शिपिंग यातायात में पिछले 3 वर्षों में लगभग 11% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में 133 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम और वर्ष 22-23 में 151 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, वर्ष 2023-24 में 162 MMTPA रहा है और सरकार के समुद्री अमृत विजन काल 2047 के अनुसार देश में परिवहन किए जाने वाले तटीय कार्गो की संख्या बढ़ाकर 1300 MMTPA करने की योजना है महोदया। इससे ट्रेड और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस विधेयक के सेक्शन 41 में यह प्रावधान है कि कोस्टल शिपिंग में जो भी समस्याएं होगी उसका निष्पादन किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश में भारत के तटों से माल ढुलाई में तेजी आई है। शिपिंग मंत्रालय के डाटा के अध्ययन करने से पता चलता है कि सरकारी बंदरगाहों की तुलना में निजी बंदरगाहों में वृद्धि दर ज्यादा रही है। मेरा इस बिल में सुझाव है कि सरकारी बंदरगाहों को भी संख्या बढ़ाई जाए ताकि अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो। महोदय, अप्रैल 2023 से अगस्त 2023 के बीच सरकारी बंदरगाहों द्वारा संचालित कोस्टल शिपिंग में केवल 1.3% की वृद्धि हुई है और कुछ बड़े तटीय केंद्रों में तटीय आवाजाही में पिछले साल की तुलना में गिरावट आई है। वर्ष 2023-24 में प्रमुख बंदरगाहों में 750 लाख टन तटीय कार्गो का संचालन किया है, जबकि गैर प्रमुख बंदरगाहों से 550 लाख टन की ढुलाई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 5 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित किए जाएं। इस विधेयक से निश्चित ही कोस्टल शिपिंग में मजबूती आएगी। वर्तमान विधेयक के पास होने से भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आएगी। महोदया, द कोस्टल शिपिंग बिल के पास होने से देश में जल मार्ग के नए राजमार्ग बनेंगे, देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे एवं विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। इस बिल में मेरा एक सुझाव भी है कि हर मौसम में काम करने वाले गहरे पानी के अंदर बंदरगाहों को भी बनाने का प्रावधान किया जाए ताकि हम समुद्री क्षमताओं का भरपूर उपयोग कर सकें। महोदय, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 जो कि यूज ऑफ ओशियन, सीज और मेरीन रिसोर्सेज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, इसलिए मेरा यह सुझाव है कि हरित ईंधन और हाइड्रोजन संचालित जहाजों के निर्माण को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि समुद्री प्रदूषण को भी अधिक से अधिक कम किया जा सके। महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनिल देसाई जी। Thank you, Chair Madam. Coastal Shipping Bill 2024. I have few points to make out of this bill. I think Shipping Minister is missing from the House. This bill envisages, and it has got a main objective to enhance and strengthen the water-based trade. The trade, India has a more than 7,500 kilometers coastline, out of which around 750 kilometers which is there in Maharashtra. As far as Maharashtra is concerned, the laws which are there, which shipping industry goes through or observes them, that major ports are connected and regulated from the central government, and minor and intermediate ports are being taken care by the maritime bodies of the state governments. Sir, Madam, when nothing was in sight and when India was ruled by the Britishers, much before that, when the Mughal emperors, they reigned India, it was Chhatrapati Shivaji Maharaj, who you could call or describe him as a visionary who was real admiral of the naval fleet. Kanoji Angre, who was the chief commander of Chhatrapati Shivaji Maharaj naval force. And since then, that Maharashtra, what we have witnessed, what we have seen, but unfortunately over the years, kind of the infrastructure which ought to have been robust infrastructure in place, which is not so here in India. Now that waterways we are looking at, that it's a basic mode of transportation, which is the cheapest in fact as compared to rail or even road transport. But what laws we are going to follow? Now here in the bill, if we
have, whatever time has been allotted to me to speak on this. But I would say that, as has been mentioned earlier by, I think, Saugata Royji, that DGCA, the kind of powers which are given to through this bill to the DGCA, Director General, that concentration of power, that will hamper the objectives and the aims of the bill, what you envisage. There are revision in penalties also. These are the things when we think of encouraging one part, and if government really thinks very seriously to come out with something to dole out to the people who your participation of private players is also envisaged in this. You've given a lot of encouragement through that also if private players come into this. If you want to have that, the kind of liberty which should be given, of course regulation has to be there to check, but check the accountability, check the regulation of the law, but at the same time, that kind of liberty be given. If you see the internationally what is happening, compared to that, we are nowhere near international benchmarks. We go by, like for compounding of offences, these are the powers which are with the principal officer and the DGCA, the authorities. Now, offences which happen, one who is a regular history sheeter, one can understand that revocation of licensing and all that. But those who are there by oversight or inadvertent mistakes when they happen, forgetting the main documents or, absence of main documents when they are asked at the time of check, if they are not found, if severe penalty is given, that hampers not only the growth of that individual or that organization, but it hampers in a big way that ecosystem itself gets disturbed. The another potential what you have seen is regarding the recruitment of good people. What Indian seafarers today are finding, because foreign shippers are the main players who have captured this complete industry. And if Indian vessels, Indian flag vessels are to come into the play, then we have to compare with what is happening internationally. Internationally, total exploitation of our seafarers, sailors is happening. And there has to be check as far as this new regulation is concerned. Their emoluments, their remuneration, and really that kind of scope need to be there, that crew is developed, that other technical staff is developed. One more, this thing is, it is not only for carrying or carriage of goods and the passengers. Besides that non-propelling vessels like drilling units, they are also included in this, because coastal, by way you are encouraging trade out of coast. So coastal trade, if it is to take place and really it has to progress the way it is being designed, then these are the things where we have to, I think government will be giving much more attention than what is only come out by way of this legislation. And once it is done, then I think we will be at par, or we should have an objective that India would be one of the best, or internationally, that we compete with foreigners, we compete with advanced countries, and that kind of infrastructure we build and the encouragement be given. Thank you, Madam. I support this bill. Dhanyavad. Report of the Business Advisory Committee, Honorable Sri Arjun Ram Meghwal ji. Honorable Madam, with your permission, I rise to present the 9th report of the Business Advisory Committee. Thank you. Honorable Member Srimati Supriya Sule ji. Thank you, ma'am. I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party SP to speak on the coastal shipping bill. So as mentioned by my earlier colleagues, that India has had a history of maritime trade and a strong naval fleet for generations. Be it Chhatrapati Shivaji Maharaj, be it the Chola dynasty, be it the Pandyan dynasty. These are several dynasties which initially, whenever history is written about the maritime
ports, and the trade. These are huge contributions which actually made our global trade much closer and effective. While this happened in India's history, then came modern India under the leadership of Pandit Jawaharlal Nehru. And then Maharashtra has a long coastal route, as you say, which is connected to other states in the south. And in our long coastal line that we have, we in Maharashtra had the JNPT, which is one of the finest ports in India. We have Port Trust, which is a very old but a very effective port in Maharashtra, in Mumbai. And we have the new Vadhavan port, which is coming in Maharashtra, which we discussed just last week. I appreciate the efforts of the Honorable Minister, but I have noticed that every week he comes up with one bill. I request him that if he brings a large consolidated bill of making effective changes in his ministry, it will make a larger impact on this maritime trade that this government is trying to bring in. I would like to make a few suggestions to the Honorable Minister and ask him a few questions for clarification of the industry as well. That there was a 1838 and a 1958 Vessels Act, which talked about regulation, safety, security, pollution, prevention. Now, while he is covering all these points and consolidating several of these issues every week in his mantralaya, in his department, I request him that he should even make sure that every fisherman, because we just debated a lot of fishery, dairy, allied businesses and agriculture today. So the fishermen have to be protected and looked after every time we do any kind of this. My colleague sitting here from the DMK, I know how much they suffer every time. When some fisherman by default goes across the border, he has no clue, there are really no borders there. And how they are caught, punished. So I think while we have policies for port and maritime trade, we must be very, very sensitive to the fishermen of this country, which are very critical part of an economy of this country as well. They do participate in the growth of this country. Just because they don't have a loud voice, that doesn't mean, or they don't create crores of infrastructure, that doesn't mean they don't deserve a voice in this house that we are standing on. I would like to ask them a few questions which we need to seek clarification, ma'am. Streamlining of licensing in these procedures. I appreciate the efforts of the government to bringing the foreign and the Indian vessels together on the same thing. But while you are bringing this great introduction by using technology, I would like to ask that will there be a license which will be approvals or rejections in a timeline manner? So if you're using so much technology, it has to be very effective and it has to be time bound. Only then this industry would really grow. Nobody wants harassment. The second thing is they've used the word services. Now in services, after GST has come, there are various services. The income tax bill which we have in the all of us, several of us in the committee, there is a word service. GST has a word service. Every industry has the word service. Now this also they have brought in a service. So while there is taxation and services, the definition of the word services must be totally uniform in all these cases is something that the government must clarify. And if they haven't done it, I urge them to bring it under one meaning in every bill and make sure it is the same everywhere so there is no confusion in any industry. Next thing is modernization and digital integration. Now they have talked about making a database. With so much technology, it is so easy. But this real data name, it has to be analytical driven and make sure that policy making and investments in this industry have to be tracked. Because most young people who are looking for jobs are always confused. They don't know where to apply. Even if they apply, the skilling is not good enough. There's always upgrading of skills required with so much change in technology. So be it policy or employment, what is the specific intervention this government is doing, they must clarify. While just last week, my colleague and friend Kani Moliji talked about extensively during question hour about environmental safeguard. She herself comes from a constituency which has a very big port, which was mentioned by my colleague earlier. Now, the whole thing is decarbonization efforts for making sure there is no or less pollution. I won't say no pollution because that's not possible. It's too idealistic to expect that. But can we not work towards making it a zero pollution business and making sure that the fuels in this entire shipping industry are clean? India has a huge ammonia efforts that we have. We have a lot of
ammonia. Is it possible to integrate it, which is an international demand? From January, I'd like to just quote this, from January 1st, 23, all ships must comply to an International Maritime Organization's Energy Efficiency Existing Shipping Index and a carbon intensity indicator. I think this is very, very critical. And Kanimozi ji also talked about it in the question hour. So I think we need, while you're making these policies, environment has to be at the center of any growth of any great infrastructure project in this country. Conflict resolution, Professor Roy talked about it. I will not repeat it, but I'd like to make a small point. What he has suggested, I'd like to reiterate that the Director General is going to be made in charge of all this policy. Will it be too much consolidation of power in one place? So I'd like to reiterate what Professor Roy has said, that please rethink it. It's not that we don't mistrust anybody, but to consolidate energy in one place may not be the idealistic situation in any business for that matter. The other small point is that ease of doing business. This government constantly talks about ease of doing business. So they have used the word penalties, restrictions. These are not words anybody likes in a growing economy anywhere in the world. So I urge them, like we have made in other laws, that you either give them a first warning, second warning, and third warning, or even a case which my colleague Krishna, I may not have agreed with his entire speech, but I do value the intervention that he made, that if there is an industry which is suffering, and if somebody has a penalty, and for 9 months, somebody who has really not done anything wrong has to suffer, the business suffers, and not only the business, but the owner suffers, thousands of stakeholders of that company suffer, who are very poor and hardworking and honest citizens of the state. So while you are talking about penalties and ease of doing business, I think this government must focus. Don't put fear in. Even in taxation, I spoke in my finance bill, don't put fear in the industry. Investors are honest. Indians by nature are honest. So don't threaten them or bring fear, be it income tax, be it in GST. We don't want tax terrorism or any policy to scare investors. If you are making policies, make them people friendly. Show people that you have faith in them, and Indians will deliver superior results, and make sure it's India's growing economy which they want, from the fifth to the third to the first. We are very happy if they reach by 47, 57 or whichever year they want to go into. But these are all idealistic things on paper. I think they need to walk the talk for making sure that they are good in ease of doing business. And the last small point for good investors in India operation and shipbuilding, there are 3 very serious interventions this government needs to make. Is make sure that's a good and easy tax policy, make sure there's good access to credit and easy access to credit, and the infrastructure support that governments need to go and encourage maritime trade. I again take this opportunity. I appreciate all the good work done by the very honorable minister, but if he consolidates it, I think he'll be far more effective. He is effective, but he'll be far more effective if he consolidates all his bills together. Thank you. Honorable Member Shri Ravindra Vaikar ji. इस बिल के ऊपर कहते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज called the father of the Indian Navy. हमारे देश में समुद्र का पहला महत्व जो सोचा था वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने। इसी के कारण उन्होंने तट के ऊपर अपने किले भी बनाए थे, अपनी सेना, अपनी फौज भी रखी थी। हमारे मुंबई में पोर्ट्रस कहा जाता है, गोदी, वहां से हम इसी प्रकार से व्यापार करते हैं। गोदी से माल यहां और लेके जाते हैं, वर्ल्ड में कहां भी। वाडवन बंदर हमारे यहां अभी शुरू होने जा रहा है। देश के 10 पोर्ट्रस के जैसे एक उसमें नाम वाडवन का आने वाला है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे कोस्टल शिपिंग बिल 2024 पर बोलने का अवसर दिया। यह विधेयक केवल एक कानून नहीं, बल्कि भारत की शक्ति को डेवलप करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। भारत एक समुद्र राष्ट्र है जिसमें 7,500 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा केवल पर्यटन या सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति का आधार बन सकती है। आज अब वैश्विक व्यापार का 90% समुद्र मार्गों से होता है, तब कोस्टल शिपिंग हमारे देश के लिए एक कोस्ट इफेक्टिव, इको फ्रेंडली
और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट विकल्प बनकर उभारा है। ये विधेयक भारत को लॉजिस्टिक हब में बदलने का दृष्टि से एक मजबूत नींव डालता है। कोस्टल शिपिंग बिल 2024 के तहत अब केवल भारतीय जहाजों को कोस्टल ट्रेड करने की अनुमति होगी और विदेशी जहाजों को उसके लिए डायरेक्टर जनरल शिपिंग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिनका कई लोगों ने अभी जिक्र किया कि लाइसेंस तो उनको लेना ही चाहिए। जिस प्रकार हमने हमारी सुरक्षिता देखनी है तो उनको कौन आता है कौन जाता है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत ही वो लेना जरूरी है। क्लॉज 3 और 4 में और 5 के प्रावधान कोस्टल वाटर के अनुशासित और पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा देने, वही क्लॉज 8 के अंतर्गत एक नेशनल कोस्टल और इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजी प्लान तैयार किया जाएगा, जो शिपिंग सेक्टर के लिए एक दीर्घकालीन रोड मैप साबित होगा। सभापति महोदय, इस विधेयक में माध्यम से 1958 के मर्चेंट शिपिंग एक्ट के पार्ट 14 को समाप्त किया जाएगा और अब सभी प्रकार के जहाज, चाहे वो मोटराइज हो या सेल्फ प्रोपेल्ड हो या सेलिंग वेसल हो, इस कानून के दायरे में आएंगे। बिल में सर्विस जैसे रिसर्च, एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल एक्टिविटीज को भी कोस्टिंग ट्रेडर के शामिल किया गया है, जो मैरीटाइम इकोनॉमी को विविधता प्रदान करेगा। ये कानून इस बात की भी व्यवस्था करता है कि अगर जहाज पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के स्वामित्व में है तो उसे लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, यानी हमारे लोगों को हम लोग बढ़ावा दे रही है। ये कदम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। बिल में पेनल्टी जो आधुनिक बनाया गया है, बिना लाइसेंस संचालन पर अब 15 लाख तक जुर्माना होगा, यानी कानून नाम की कोई चीज होनी चाहिए, उसी के माध्यम से ये कानून बनाया गया है। यानी रुपए 15 लाख तक जुर्माना या मुनाफे का 4 गुना लगाया जा सकता है। यानी एक स्ट्रांग होना चाहिए, बाबा गलती मैंने की तो हमें भुगतना ही है, चाहे कोई भी हो। तो उसी प्रकार से डायरेक्टर जनरल ऑफ ये अधिकार दिया गया है। ये आवश्यकता पड़ने पर जहाजों को रोक भी सकता है। ये केवल एक नियम नहीं बल्कि मैरीटाइम सेफ्टी और इसके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये विधेयक जैसे समय में आया है जब भारत में शिपिंग और पोर्ट डेवलपमेंट के कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो गई है। 2014 के बाद इनलैंड वाटर में 320% की वृद्धि हुई है। इससे कम लागत पर माल की आवाजाही सुनिश्चित हुई है। सभापति महोदय, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के रूप में 25,000 करोड़ का कोष व्यवस्था की गई है, जिसमें सरकार 49% की भागीदारी करेगी और बाकी योगदान मेजर पोर्ट, PSES, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंटाइटल्स को दिया जाएगा। यानी किसी को ना किसी को तो हमें मदद करना ही है, यानी हमारा भी पार्ट होगा और बाकी के लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। शिपिंग फाइनेंस असिस्टेंस पॉलिसी 2 के तहत 18,090 करोड़ की राशि स्वदेशी जहाज निर्माण उद्योग को सशक्त बनाने के लिए निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय शिपयार्ड को अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सक्षम बनाना है। इसके साथ साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल 2025 तक संचालन शुरू करेंगे, जो हमारे टूरिज्म बेस्ड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रतीक होगा। सरकार की प्रतिबद्धता भी है कि 150 मैरीटाइम प्रोजेक्ट को 6 सितंबर 2025 तक पूरा किया जाए। ये केवल समयबद्धता बल्कि परिणाम केंद्रित शासन का उदाहरण है। कोस्टल शिपिंग विधेयक भारत की समृद्धि अर्थव्यवस्था पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालने की क्षमता है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि भारत के लॉजिस्टिक लागत को कम करने की मदद कर सकता है। तो वर्तमान में देश के सकल घरेलू उत्पादन यानी GDP 13 या 14% से सब्दी वैश्विक औसत 8.9 के बीच है। सभापति महोदय, कोस्टल शिपिंग विशेष रूप से कोयला, इस्पात और सीमेंट जैसे भारी मालों के लिए सड़क और रेल परिवहन की तुलना में एक कम लागत वाला और प्रभावी विकल्प प्रदान करता है। ये विधेयक सड़क और रेल परिवहन से कोस्टल शिपिंग की और एक मॉडल शिप की प्रोत्साहित करता है, जिससे परिवहन लागत में आएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय वस्तु की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ेगी। लेकिन इस विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण पहलू है जिनमें और बेहतर किया जा सकता है। मंत्री महोदय, जिसके माध्यम से सबसे पहले हमें उन देशों से सीखना है, आवश्यकता है जिन्होंने कोस्टल शिपिंग को अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में
सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जैसे कि अमेरिका के जॉन्स की तरह भारत में इंडियन फ्लैगशिप्स और इंडियन स्क्रू की अनिवार्यता सुनिश्चित करे। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी देशों की मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से हम सीख सकते हैं कि कोस्टल शिपिंग को रोड और रेल ट्रांसपोर्ट में कैसा जोड़ा जाए। ये जोड़ने से हमारा और व्यापार वृद्धिगत और अच्छा हो जाएगा। दूसरा, ये बिल सुनिश्चित कहता है कि कोस्टल शिपिंग पर भारतीय नाविकों को की अनिवार्य नियुक्ति हो। जब हम आत्म भारत की बात करते हैं तब मैरीटाइम जॉब्स को सृजन हमारी प्राथमिकता से होना चाहिए। यह जरूरी है कि इन जहाजों पर भारतीय नागरिकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। तीसरा, डोमेस्टिक शिपिंग ओनर और ऑपरेटर्स को फाइनेंशियली बर्डन उठाना पड़ता है, खासकर टैक्स और ऑपरेशनल कॉस्ट में रूप में। यदि भारत को लॉन्ग टर्म कोस्टल शिपिंग इकोसिस्टम बनाना है तो इन चैलेंजेस को दूर करना होगा। टैक्स रेजिंग को सिंप्लीफाई बनाना और वेसल फाइनेंसिंग को सस्ता या सुगम किया जाए। चौथा, भारत की कोस्टल शिपिंग का मॉडल शेयर 6.4% की, जबकि चीन, जापान और यूरोपीय देशों में 30% से अधिक है। इसका सीधा असर सड़कों के ट्रैफिक प्रदूषण, लॉजिस्टिक कॉस्ट पर पड़ता है। हमें कार्गो मूवमेंट को इंडियन फ्लैग्स वेसल पर अनिवार्य करना चाहिए ताकि भारतीय शिपिंग को मजबूती मिले और विदेशी निर्भरता घटे। भारत का लॉजिस्टिक कॉस्ट अभी जीडीपी 13 से 14%, जबकि ग्लोबल में खाली सुझाव देता हूं। मेरे 3 सुझाव ही है खाली। बंदरों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण करना चाहिए। भारत के बंदरों का आधुनिकीकरण तकनीक से लेस करना और प्रक्रिया को डिजिटल बनाना महत्वपूर्ण है। इससे दक्षता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और लागत कम होगी। तटीय नौवहन को बढ़ा देना, तटीय नौवहन को बढ़ा देने के लिए नीतियां बनाना आवश्यक है। इससे सड़क और रेल परिवहन पर निर्भरता कम होगी, जिससे प्रदूषण और यातायात की भीड़ कम हो जाएगी। अंतर्देशीय जल मार्गों का विकास, नदी और नहरों से अंतर्गत जल मार्गों का विकास करना माल परिवहन के लिए एक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान कर सकता है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने के लिए बंदरों को जोड़ने वाली सड़कों और रेल लाइनों को लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना आवश्यक है, जिससे माल की आवाजाही आसाम से तेज हो जाएगी। कौशल्य विकास को बढ़ाना देना चाहिए। इसी के साथ में मेरे मुझे बोलने को कहा, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य कुमारी आर सुधा जी। Thank you, Speaker sir, for the opportunity. I represent a core stretch of a famed historically significant Coromandel coast of a great Cholas. My Mayiladuthurai Parliament constituency alone has a 50-kilometer of core coast, which once used to be among the top fishing destination. Even now, besides fishing community, Mayiladuthurai has such historically renowned ports like Tarangambadi, Pumbugar, Payar of Sirgari. Places like Karekal and Kodikarai and Nagapatna are not far away. So I represent a critical stretch of our coast, which has been neglected for long and for which this government does not have any plan to develop. First of all, here are the salient features of bill under debate. The Coastal Shipping Bill 2024 was introduced in the Lok Sabha on December 2nd, December 2024. Territorial waters extend up to 12 nautical miles from the coast, about 22 kilometers. Adjoining maritime zones extend up to 200 nautical miles, about 370 kilometers. The bill seeks to regulate all types of vessels, including ships, boats, sailing vessels, and mobile offshore drilling units, regardless of them being self-propelled or not. The bill expands this definition to include provision of services including exploration, research, and any other commercial activities except fishing. The Coastal and Inland Shipping Strategy Plan. The bill requires the central government to prepare a national coastal and inland shipping strategy plan within 2 years of the commencement of this act. My sincere concerns stem from only a couple of provisions, which are: number one, bringing all the vessels, including the ship, boats,
sailing vessels under the ambit of this law. Secondly, mobile offshore drilling units under the ambit of this law. Sir, the bill lays down too much of importance of power and regulatory jurisdiction of the union government and less importance of the people who own, manage and run the vessels for general welfare and development of the nation. I request this August House ask itself as to what has been done to help develop ports like Tarangambadi, Pumbugar and Padayar and Sirgadi, unless berthing capacity, cargo handling capacity and repairing facilities are created and improved in these ports. This bill will mean a little or nothing to my constituency, in particularly the Tamil Nadu in general. I would like to know that what budgetary allocation and policy proposals are there for my constituency. The next important issue is the offshore drilling, which are notoriously high from my Mailadure constituency right up to the ecological fragile Gulf of Mannar. Even in this latest report, the union government had admitted that it had either granted or was considering offshore drilling permission for private companies as well as public sector undertaking. Such joint destruction of my Coromandel coastal stretch along my constituency and beyond is impermissible for social, political, economical and environmental reasons. I seek to know if the key stockholders who are the fisherman community has been consulted before these provisions are drafted and placed before the August House for the debate. Speaker, Madam, this government has three enemies. One is farmers, another one is weavers, another is fishermen. It has done nothing for these three communities which have given India its identity in the commitment of the nations. Of course, your other bias against the women, underprivileged communities and social justice will make the issue only worse. I want this House to first debate what is the amendment proposed to do for fishermen. Whether the fisherman community has been consulted before it is drafted and then cleared for the further proceedings. Madam, in my Mailadure constituency in Tamil Nadu, there are 14 districts or coastal districts. 1076 kilometers are coastal line. கடல் பகுதிகள் அந்த கடல் பகுதிகளில் 608 மேற்பட்ட மீனவ கிராமங்கள் அமைந்துள்ளது. இதில் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் சீர்காழி, பூம்புகார் என்ற 2 சட்டமன்ற தொகுதியில் மட்டுமே 46,636 மீனவ குடும்பங்கள் இருக்கின்றது. அதில் குறைந்தபட்சமாக 15,000க்கு மேற்பட்ட மீனவர்கள் தன் வாழ்வாதாரமாக மீன்பிடி தொழிலை மட்டுமே செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு மீன்பிடி தொழிலை மட்டும் நேர்மையாக செய்து கொண்டிருக்கின்றவர்களின் மீனவ மக்களின் நிலைமை என்னவாக இருக்கின்றது என்றால், கடல் பகுதிக்கு சென்று மீன் பிடிக்கும் பொழுது இலங்கை கடற்படையால் மிகவும் மோசமாக துன்புறுத்தப்படுகின்றார்கள். அவர்கள் படகுகள் பிடிக்கப்படுகிறது, அவர்களை அரசு செய்கிறார்கள். சட்டத்துக்கு புறம்பான செயல்கள் எல்லாம் இலங்கை கடற்படையினர் இந்திய மீனவர்களுக்கு எதிராக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்திய அரசாங்கமும் தமிழகத்தில் இருக்கின்ற மீனவர்கள் பாதிக்கின்றார்கள் என்ற எண்ணத்தோடு பார்க்காமல், அவர்கள் இந்திய மீனவர்களாக பார்க்காமல் தமிழக மீனவர்கள் என்று பார்த்து அவர்களுக்கு எந்த ஒரு உதவியும் செய்ய மறுக்கிறார்கள். இது ஒரு மிக மோசமான உதாரணம். ஏனென்றால் ஏற்கனவே இந்த அவையில், மாண்புமிகு அவையில், நான் போன மாதத்தில் ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருந்தேன். அந்த கேள்வி கிடைத்த பதில் என்னவென்றால், இந்தியாவில் கடற்பகுதியை சுற்றி இருக்கின்ற தேசங்களில் இந்திய மீனவர்கள் எங்கெல்லாம் பிடிக்கப்பட்டிருக்கார்கள் என்று கேள்வி கேட்டதற்கு பங்களாதேஷ் மற்றும் பாகிஸ்தான், துபாய், ஸ்ரீலங்கா போன்ற தேசங்கள் எல்லாம் இந்திய மீனவர்கள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு, அவர்கள் படகுகள் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு அவர்கள் வாழ்வாதாரம் மிக மோசமாக இன்றைக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்ற சூழல் இருக்கின்றது. இந்திய அரசாங்கத்தின் கடமை மீனவர்கள் காப்பாற்ற வேண்டும். இன்றைக்கு போர்ட் என்ற ஷிப்பிங் பில் எல்லாம் நாம் இன்றைக்கு இந்த மசோதாக்கள் இன்று நம் அவையில் அறிமுகம் செய்கின்றோம். ஆனால்
ஃபிஷர்மேன் இல்லை என்றால், மீனவ மக்கள் இல்லை என்றால், கடல் பகுதி என்ற ஒன்று இருப்பதற்கான அர்த்தமே இல்லாமல் போகும். கடல் பகுதி என்ற அர்த்தமே இல்லை என்றால் அங்க இருக்கின்ற வணிகம் நடக்காது, அங்க போர்ட் இருக்காது, போர்ட் ட்ரஸ்ட் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் மீனவர்களை பற்றி எந்த ஒரு கவலையும் இந்த அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம் கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தால் வருங்காலத்தில் மீனவ சமுதாயமே அழிந்து போகின்ற ஒரு சூழல் ஏற்படும். இந்தியாவில் 3 கோடிக்கு மேலாக மீனவ மக்கள் தொகை இருக்கின்றது. அதற்கு 20 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட மக்கள் மீன்பிடி தொழிலே செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். நாம் இந்த கூட்ஸ் அண்ட் கேரேஜ், போர்ட் அண்ட் ஷிப்பிங் பில் போன்ற பல்வேறு மசோதாக்களை இந்த நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றுவதற்காக கொண்டு வருகின்றோம். ஆனால் மீனவ மக்களின் வாழ்வாதாரத்தையும் அவர்கள் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக நம்ம சிறு துரும்பை கூட மத்திய அரசாங்கம் எடுத்து வைக்கவில்லை என்பதுதான் மிக மோசமான சூழலை இன்றைக்கு பார்த்தால் நம்ம டோல்கேட்டில் அதிகமான வரியை கொடுத்து, டோல்கேட் என்ட்ரி ஃபீ கொடுத்து இன்றைக்கு மக்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்ல வேண்டிய சூழல். இன்றைக்கு தமிழகத்தில் 75 ரூபாய் இருந்த டோல்கேட் ஃபீ இன்றைக்கு 150 ரூபாயை உயர்த்தி மிக மோசமான ஒரு சூழலுக்கு இன்றைக்கு இந்தியா தள்ளப்பட்டிருக்கிறது. காலையில் எழுகின்ற ஒரு இந்தியன் இரவு தூங்கும் வரை இந்த தேசத்திற்கு வரி 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 என்று கட்டிக்கொண்டு தன் வாழ்வாதாரத்தை ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மத்திய அரசாங்கம் எழுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. ஒரு சாதாரண எளிய மக்களின் வயிற்றை கிழித்து அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வருமானத்தையும் அவர்கள் பொருளாதாரத்தையும் எடுத்து அவர் ஏழ்மை நிலைக்கு தள்ளுகின்ற ஒரு தேசமாக இன்றைக்கு இந்தியா சென்று கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக ஏடிஎம் நிலையங்களுக்கு சென்று நம் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்தால் ஒரு முறை 2 முறை எடுத்தால் ஃப்ரீயாக எடுக்கலாம். ஆனால் 5 முறை எடுத்தால் 23 ரூபாய் எடுப்பார்கள், ஃபைன் எடுப்பார்கள் என்றால் அதுக்கு பெனால்டி போடுவார்கள் என்றால் 23 ரூபாய் என்பது ஒரு சக மனிதன், ஒரு சாதாரண எளிய மனிதனின் ஒரு நாள் உணவுக்கான பணம் என்பது 23 ரூபாய். அதை நீங்கள் வரியாகவும் ஃபைனாகவும் பிடித்துக் கொள்வதாக சொல்லி ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களின் பேக்கெட்ல இந்திய மக்களின் பேக்கெட்டில் இருக்கின்ற பணத்தை ஒட்டுமொத்தமாக சூறையாடி கொண்டு கொள்ளையடித்து கொண்டு இருக்கின்ற தேசமாக இன்றைக்கு மாறி போயிருக்கிறது. அன்றைக்கு வ.உ.சி. சிதம்பரம் பிள்ளை அவர்கள் பிரிட்டிஷாரை எதிர்த்து சுதேச கப்பலை இயக்கினார். எதற்காக என்றால் பிரிட்டிஷ்காரிடம் எதிர்த்து போட இந்தியாவிற்காக ஒரு பெருமையாகவும் இந்தியன் ஒரு வணிகம் செய்ய முடியும், சுயமரியாதையாக தன்மானத்தோடும் பிரிட்டிஷ்காரரை எதிர்த்து சேவை செய்ய முடியும், பிரிட்டிஷ்காரை எதிர்த்து இந்திய தேசத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் சுதேச கப்பலை இயக்கினார். ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமே இன்றைக்கு மீண்டும் இந்தியாவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இது மிகப்பெரிய அவமானம். இது இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தை எதிர்த்து ஒட்டுமொத்த மக்களும் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். வரி 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 என்று தினந்தோறும் மக்களின் பேக்கெட்டை கொள்ளடிக்கின்ற இந்த அநியாயமான பிடித்த இந்த சேவையை தயவு செய்து நிறுத்துமாறும், இந்த வேலையை நிறுத்துமாறும் மக்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதை தாண்டி இன்றைக்கு இந்த பில்லில் நிறைய பல விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கின்றது. 3 கோடி மீனவ மக்களிடம் இந்த பில்லை குறித்து ஒரு கேள்வி கூட, ஒரு கருத்தை கூட நீங்கள் பெறாமல் இந்த பில்லை நிறைவேற்றுவதற்காக துடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். இது மிகப்பெரிய அநியாயமானது. குறிப்பாக சர்டிபிகேட் ஆஃப் இவாலுவேஷன் என்கின்ற all the Indian officers and engineers who got their competency licensing from foreign countries which are white flag nations. Madam, all the Indian officers and engineers who got their competency license from foreign countries which are white flag nations, that is England, Singapore, New Zealand, etc. As per IMO, International Maritime Organization, should be given an opportunity to work on Indian coastal ships. It has been observed that there is shortage of highly trained officers and engineers to work on ship like coastal tankers. So Indian national who have taken competency certificates from white flag nations can be employed on these vessels. Presently rules and regulations are in the places, but it has been reported that lot of difficulties are being faced by owners and authorities recruiting agency in getting the certificate of equivalence. Madam, 1 minute I complete. In Mercantile Marine Department. So amendments need to be done so that these Indian officers and engineers transition from working in foreign shipping to coastal shipping is easy. Coastal shipping will get a lot of benefits from the experience and highly skilling training of these and these safe years.
Class 3 member, madam, I conclude, within 1 second I complete. I conclude. Class 3, this class prohibits the engagement of vessel other than Indian vessel. Thank you very much, Honorable Speaker, madam, for giving me an opportunity to speak on Coastal Shipping Bill. I have risen to speak to support Coastal Shipping Bill 2024. Indian shipping industry is crucial part of our economy involving both public and private players and encompasses of ports, shipping and waterways. India's location is crucial for global shipping routes. India has 12 major ports and 205 minor ports handling large volumes of cargo traffic. In 2024, they handled 817.97 million tons of cargo, showing an increase of 4.5% from previous year. Madam, India's maritime industry dates back to 13th century and 16th century. India is one of the world's top 5 shipping recycling countries and holds as large as 30% share in the world market. India ranks 18th in the world shipping tonnage. 16th, India is the 16th largest maritime country in the world and has a merchant fleet of 1,491 sea-going ships with a total capacity of 13 million GT. अगर ports होंगे तो ships होंगे और ships होंगे तो shipping industry होगी. The Coastal Shipping Bill 2024 was approved by the Union Cabinet, which aims to simplify and modernize regulation in Indian coastal shipping sector and to enable the statutory imposition of specific licensing conditions engaged in coastal trade, thereby promoting the regulation of such activities and boosting the domestic coastal shipping economy. The bill will also benefit ship owners and shipyards in India, non-vessel operating common carriers and cargo owners besides seafarers. It will repeal and replace certain provisions of the Merchant Shipping Act 1958 and aims to enhance the share of coastal shipping from the current 6.5% to 7.5% by 2030 and further to 12% by 2047. The bill is set to benefit ship owners, shipyards in India, non-vessel operating common carriers, cargo owners and seafarers. Additionally, Indian shipbuilding is expected to receive a significant boost as the Ministry of Port, Shipping and Waterways officially indicate that the bill will promote the use of Indian-built ship for coastal shipping and trade. The Modi government has encouraged and supported shipping industry through various policy initiatives such as 100% FDI in automatic routes for port, facilitating 10 years tax holiday in making and maintaining for ports, and creation of huge fund of 25,000 crore Maritime Development Fund for long-term financing for the maritime industry. India has a coastline of 7,516 kilometers. Shipping industry accounts for 13.4% in country's GDP growth. It handles about 95% of the country's trade by volume and 70% by value. The government plans to invest rupees 7,000 crore only in port infrastructure project by 2035 to bolster the maritime sector. सर इससे पहले भी मोदी जी ने अगले साल इंडियन पोर्ट बिल 2024 लाए थे और देखने की बात यह है कि इंडियन पोर्ट एक्ट भी आजादी से पहले बने 1908 जो बना था वो सुधारने का कांग्रेस में अभी कोई समझ नहीं आई. Additionally, the government plans to establish shipbuilding and repair clusters in 5 states: Gujarat, Maharashtra, Kerala, Andhra Pradesh and Odisha. These clusters will not only generate employment opportunities but also bolster India's position as a global hub for ship manufacturing and maintenance. The bill also seeks to integrate the coastal maritime transport with inland waterways. Sir, madam, Congress never invented and invested in ports and shipping. Madam, with your kind permission, I may recall that on June 1924, the Modi government approved plans to invest over 800 billion rupees in the construction of Vadhavan Port located in North Mumbai, which is going to be one of the top ports in the world in future. Madam,
It is also heard that to boost the shipping industry of India, the government is planning to establish a new shipping company to expand its fleet by at least 10,000 ships in the next decade. ये है मोदी का विजन और मिशन. On July 26, 24, Modi government announced new shipping financial assistance policy, providing financial aid of rupees 337 crore to enhance India's competitiveness against foreign shipyards. Since the inception of the policy, 313 vessels orders worth rupees 10,000 crore has been secured. Our Gujarat has also a vast coastline of 1,600 kilometers, which has three ports, Kanla, Mudra and Hazira, which has great potential if developed to generate employment and fisheries business in the state. Hazira near Surat is the less developed, and I demand that some fund may be provided for the development of Hazira fund. Apart from that, seashore is near to Surat, Dimmas and Rafari and Dandi. These three shores, if developed fully and if provided fund, then they have great potential for the fishermen of the city. The proposed bill is a key component of India's comprehensive strategy to accelerate the growth of its maritime sector. The country aims to double its container handling capacity within the next 5 years, potentially creating an estimated 20 lakh jobs. By fostering a more favorable regulatory environment, the bill is expected to play a pivotal role in achieving these ambitious goals. Additionally, the government plans to establish shipbuilding, repair clusters in 5 states. These clusters will help to boost development. This bill is unique in the sense of licensing reforms, integration with inland waterways. It will also boost comprehensive database development for the shipment and, most importantly, boost seafarers and shipbuilding in the country. To conclude, the bill represents a transformative step towards revitalizing India's maritime industry by simplifying processes, reducing bureaucratic hurdles, and fostering a more business-friendly environment. By introducing standardized and expedient clearance, the bill mechanism and simplifying regulation, it aims to make the sector more attractive to operators and investors. It will attract FDI and foreign investment in the future. The removal of licensing reforms will streamline coastal shipping operations, enhancing efficiency and cost effectiveness, while driving growth and investment in the industry. Ultimately, these reforms will boost the competitiveness of India's coastal shipping sector, improving its global standing and creating new opportunities for innovation and expansion. In all, I support the shipping bill, which will carry the India towards developed Viksit Bharat to 2047 mission of Narendra Modi. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री एम गुरुमूर्ति जी. Thank you, madam. Thank you for allowing me to discuss on the Coastal Shipping Bill 2024, madam. I would like to highlight its transformative potential for India's maritime sector by emphasizing its key positives, madam. Madam, Clause 4 of this bill simplifies regulatory process, madam, by allowing the Director General to grant license for costing trade, madam. Madam, it encourages more domestic operators to engage in coastal shipping and boosting domestic shipping activities, madam. Madam, Clause 8 of 2B integrates coastal shipping with inland waterways, madam. It creates a seamless multimodal transport network, madam. This enhances connectivity and reduces transportation costs, benefiting both domestic and international trade, madam. In Clause 8 of 2F promotes the use of Indian-built vessels, supporting domestic shipping and repair industries, madam. This clause of 8.2F
fostering self-reliance in maritime infrastructure, and it creates jobs, madam. In Clause 9 of this bill, establish a national database for coastal shipping to ensure transparency and aid in information sharing, madam. This enhancing transparency and facilitating better decision making, madam. These provisions collectively aim to modernize India's maritime sector, promote domestic participation, and enhance national security through the robust coastal fleet, madam. Madam, I would like to seek clarification from the Honorable Minister for the following questions, madam. On Clause 3, how will the statutory imposition of different licenses conditions on foreign vessels affect international trade and foreign investment, madam? Especially considering this clause, which prohibits foreign vessels from engaging in coasting trade without a licenses, madam. Madam, on Clause 15 and 25, will the stringent penalties introduced disproportionately affect smaller business persons, madam? And if so, what measures can be taken to mitigate this impact, madam? On Clause 37, how will the government ensure consistent enforcement of the law under this clause, which allows for exemptions and delegation of power to prevent favorism or uneven application of laws, madam? On Clause 8(2)(b), what steps will be taken to ensure the seamless integration of coastal shipping with inland waterways as proposed in this clause to maximize its benefits for domestic trade and in especially states like Andhra Pradesh, which has second longest coastal line, and we took major strides to developing new ports and harbors, madam. On the environmental compliance, how will the integration of environmental standards under the bill be enforced, and what specific measures will be taken to ensure compliance, madam? Thank you, madam. I support this bill, madam. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी. श्री सुधाकर सिंह जी. सभापति महोदया, मैं इस सदन में कोस्टल शिपिंग बिल 2024 का विरोध करने के लिए खड़ा हूं। इस विधेयक के शीर्षक में शिपिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जैसे शब्दों के माध्यम से एक आधुनिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण का आभास दिया गया है, लेकिन जब हम इसके प्रावधानों को गहराई से पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है कि विधेयक दरअसल सरकार की उसी केंद्रीकृत नीति और निगरानी पर शासन प्रणाली का विस्तार है जो लगातार विधायी प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि समुद्री व्यापार या आधुनिकीकरण के विरोध में नहीं खड़ा हूं। मेरा विरोध उस दृष्टिकोण से है जिसमें लोकतांत्रिक भागीदारी, क्षेत्रीय विविधता और व्यवहारिक जरूरतों की उपेक्षा की गई है। सरकार यह दावा करती है कि यह विधेयक देश में नौवहन क्षेत्र में को गति देगा, परंतु तथ्य यह है कि इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति मिलने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। कारण साफ है, नीतियों की अस्पष्टता, प्रक्रियाओं की जटिलता और सबसे अहम भारतीय नाविकों और श्रमिकों को रोजगार में प्राथमिकता देने की गारंटी नहीं। यह विधेयक रोजगार निर्माण की बात तो करता है, लेकिन इसे कहीं नहीं लिखा है कि भारतीय नागरिकताओं को भी प्राथमिकता मिलेगी, न कोई न्यूनतम प्रतिशत तय किया गया है। अगर सरकार वाकई इस क्षेत्र में को रोजगार उत्पन्न करने वाला इंजन बनाना चाहती है तो कम से कम 50% नौकरियां भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। भारत के बहुत सारे नौजवान दुनिया के अन्य देशों में नौ परिवहन में काम कर रहे हैं। लोग लगातार खबरें आती हैं कि विदेशों में जो हाईजैक कर लिए जाते हैं समुद्री जो जहाज और बरसों तक उसमें फंसे रहते हैं। इस विधेयक में 2 वर्षों के भीतर एक राष्ट्रीय तटीय अंतर्देशीय शिपिंग रणनीति बनाने की बात की गई है, लेकिन इसमें स्थानीय उद्योगों, मछुआरों और विशेषकर क्षेत्रीय विशेषज्ञों की कोई भागीदारी नहीं दिखती है। यह भारत की व्यापक परिवहन और व्यापारिक आकांक्षाओं से स्पष्ट रूप से कटा हुआ प्रतीत होता है। विशेष रूप से राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ढांचे में आंतरिक जलमार्गों को एकीकृत करने की अत्यंत आवश्यकता के संदर्भ में कोई यहाँ चर्चा नहीं है। सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लॉजिस्टिक लागत को कम करने की बात करती है, लेकिन यह विधेयक नदी परिवहन की क्रांतिकारी संभावनाओं को पूरी तरह से बेदखल कर देती है।
खास तौर से बिहार जैसे राज्यों में जिन्हें प्राकृतिक दृष्टि से एक अद्वितीय भौगोलिक लाभ प्राप्त है। बिहार में 7 प्रमुख नदियां गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन नदी बहती। यह प्राकृतिक राजमार्ग अभी भी भारी रूप से उपेक्षित है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से कई जैसे NW1, NW37, NW58 मुख्य रूप से बिहार होकर गुजरते हैं, जिससे नेपाल को भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधा देने की बात कही गई है। और समुद्री मार्ग से नेपाल के साथ जो हमारा समझौता हुआ है भारत का, वो इन्हीं नदियों के माध्यम से संभव हो पाएगा। इसलिए इन नदियों पर भी कोई बिना जोड़े हुए हम नेपाल को समुद्री व्यापार का रास्ता दे नहीं पाएंगे। गंगा नदी विशेष रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का हिस्सा है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होकर जाती है। कुल लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी अंतर्राज्यीय जलमार्ग परियोजनाओं में से एक बिहार के व्यापार को बदलने की असीम संभावनाएं रखती है। उपलब्ध आंकड़े की दिशा में स्पष्ट रूप से इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के जरिए माल ढुलाई की लागत 1 रुपये 30 पैसे प्रति टन किलोमीटर है, जबकि रेल से 2 रुपये 41 पैसे और नदी के जरिए 3 रुपये 62 पैसे खर्च आ रहा है। वहीं जो साहिबगंज टर्मिनल पर लागत 4.5 रुपये प्रति टन है। यह आंकड़े मामूली नहीं है, यह आर्थिक क्रांति के वाहक हैं। साथ ही IWT न केवल 4 गुना कम ईंधन खर्च कम करता है, बल्कि कम प्रदूषण, न्यूनतम शोर और लगभग 0 दुर्घटना लागत के साथ माल परिवहन का सबसे टिकाऊ और पर्यावरण सम्मत तरीका है। बिहार जैसे राज्यों में जहां रोजगार और औद्योगिक संपर्क दोनों की नितांत आवश्यकता है, IWT आर्थिक दक्षता और पारिस्थितिक संतुलन दोनों को प्रदान करता है। हमने इसके सफल उदाहरण भी देखे हैं, जहां गंगा के जरिए विदेशों से उर्वरक पटना फतुहा तक, सीमेंट पटना तक और गाड़ियों और कलपुर्जों की सप्लाई वाराणसी तक देखने को मिला। हाल में भारत और नेपाल के बीच हुए समझौते के अनुसार गंडक और कोसी नदियों को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे नेपाल को समुद्र तक पहुंच मिलेगी और बिहार को क्षेत्रीय व्यापार के लिए एक ऐतिहासिक अवसर मिलेगा। लेकिन परियोजनाओं के लिए गहरी जलधाराएं, उच्च क्षमता वाले बार्ज, सीमा पार लॉजिस्टिक समन्वय की आवश्यकता है, जो कि एक स्पष्ट, समर्थक और दूरदर्शी कानूनी ढांचे के बिना संभव नहीं। यह विधेयक दुर्भाग्य से इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं करता, सिर्फ समुद्री वाहकों और विदेशी शिपिंग कंपनियों तक सीमित रहता है। बिहार और पूर्वी भारत के लाखों उत्पादकों, व्यापारियों और किसानों को पूरी तरह अनदेखा करता है, जिनके लिए सस्ता और विश्वसनीय व्यापार संपर्क जीवन रेखा बन सकता है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, बिहार की यही नदियां जो हर साल मानसून में बाढ़ बनकर तबाही लाती हैं, यदि समझदारी से प्रबंधित और नेविगेट किया जाए तो समृद्धि की रीढ़ बन सकती है। गंगा, कोसी या सोन के डरने के बजाय हमें उनकी ताकत को आर्थिक धमनियों में बदलने की आवश्यकता है। हर साल तटबंध बनाना और बाढ़ राहत देना कोई समाधान नहीं, जबकि नदियों की खुदाई, ड्रेजिंग, टर्मिनल निर्माण, फ्लड प्लेन्स, इंडस्ट्रियल हब, बार्ज नेटवर्क में निवेश करना एक दूरदर्शी रणनीति है। नियंत्रित नौ परिवहन के लिए निरंतर रखरखाव की आवश्यकता होती है, जिसमें खुदाई, तटबंध, तट मजबूती, ट्रैफिक नियंत्रण शामिल है। और यह साल भर रोजगार देता है। सुपौल, सहरसा, कटिहार, खगड़िया, अररिया, मधेपुरा जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों को आंतरिक लॉजिस्टिक गलियारों में बदलना उन्हें आपदा क्षेत्र से विकास क्षेत्र में बदल सकता है। हर टन माल जो नदी से ढोया जा सकता है, वह केवल पैसा और ऊर्जा नहीं बचाता, यह शांति, स्थिरता और गरिमा की बुनियाद भी बनाता है। उन क्षेत्रों में से जो अब तक सिर्फ विस्थापन और पीड़ा के प्रतीक रहे, यह बदलाव है जिसके बिहार की जनता हकदार है। और माल परिवहन पर कोई भी गंभीर कानून, चाहे समुद्र के जरिए या नदी के, इतनी हिम्मत और कल्पना होनी चाहिए कि इस परिवर्तन को संभव बना सके। यही वह कानून जिसके भारत को जरूरत है, न कि खोखला विधेयक जो शिपिंग कंपनियों को सेवा करता है लेकिन भारत के जलपोत निर्माताओं को भूल जाता है। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य श्री टी उदय श्रीनिवास जी। Honorable Speaker, I rise today in strong support of Coastal Shipping Bill 2024, a crucial step towards unlocking India's immense maritime potential. Despite having a 7,500 kilometers coastal line and key access to global shipping routes,
coastal shipping accounts only 7% of India's total freight movement. This is a missed opportunity, especially when coastal shipping is 60 to 70% cheaper than the road transport and 30 to 40% cheaper than the rail transport. Strengthening this sector can help reduce India's high logistic cost of 14 to 15% of GDP compared to the global average of 8 to 10%. The Coastal Shipping Bill 2024 stands as a cornerstone reform designed to regulate, modernize and revitalize India's coastal shipping industry. One of its most significant provisions is the expansion of the definition of coasting trade. Beyond just transports of goods and passengers, it now includes vital services such as offshore exploration, research and commercial activities. This is a game changer because nearly 50% of Indian flagged vessels operate in the offshore sector. By bringing them under a structured regulatory framework, this bill will attract investment, enhance operational safety and strengthen India's position in offshore oil, gas and maritime services. Additionally, this bill eliminates licensing requirements of Indian-owned vessels, removing bureaucratic hurdles and making operations more seamless. This is an essential reform because today only 1.2% of global shipping tonnage is registered under the Indian vessels, far below our economic potential. Prioritizing Indian-built and Indian crude vessels will create thousands of jobs for our Indian seafarers and reduce our reliance on the foreign flagships. Sir, this reform is not just economic. It is about protecting our people. India is the third largest provider of seafarers globally, contributing nearly 10% of maritime workforce. At most, Indian seafarers are employed on foreign-owned vessels, leaving them vulnerable to exploitation. Disturbingly, India recorded the highest number of abandoned seafarers in 2024. To safeguard our maritime workforce and ensure stable employment, this bill can incorporate provisions to mandate minimum quota of Indian seafarers on Indian flagged vessels. Honorable Speaker, a key feature of this bill is establishment of National Coastal and Inland Shipping Strategic Plan, aimed at integrating our 14,500 kilometers of inland waterways with coastal shipping. This integration is essential to make maritime transport a cost-effective and efficient mode for goods and passengers. However, this vision cannot be realized without better maintained waterways. Sir, in the past 5 years, not even a single capital dredging project has been undertaken by the Inland Waterways Authority of India. Only maintenance dredging has been carried out. If we truly want to unlock the potential of our waterways, we must invest in large-scale planned capital dredging to ensure navigational depth and modernize India's dredging fleet with advanced technology. This bill lays the foundation for a coastal fleet which is owned and operated by Indian citizens. But truly realize this vision, we must build a fleet that is built, owned and operated by Indians. Strengthening our domestic shipbuilding industry is critical. The government has already taken commendable steps such as the revamped shipbuilding financial assistance policy, the Maritime Development Fund of 25,000 crore, the establishment of shipbuilding clusters in 5 coastal states, including Andhra Pradesh. However, to maximize this impact of these initiatives, they must be expanded. My constituency, Karnataka, is the ideal location to drive growth of this sector. With its natural deepwater port, strategic location, and well-developed industrial infrastructure, Karnataka is primed to becoming a leading shipbuilding hub. If we channel the right investments and policy support, Karnataka can be at the heart of the India shipbuilding renaissance. Under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, the NDA government is charting a new course for India's maritime future. Through bold reforms and strategic initiatives, you are not just boosting coastal shipping, but transforming India into a self-reliant maritime powerhouse, which is built on Indian ships driven by Indian talent and sailing towards global leadership. I conclude by extending my full support to the Coastal Shipping Bill 2024. Thank you, Madam. Jai Hind. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री राजा राम सिंह जी. सभापति महोदया, ये बिल अपना पर्पस को शुरू में ही रखता है to consolidate and amend the law relating to regulation of coastal shipping, promote coasting trade and encourage domestic participation
therein to ensure that India is active to a coastal fleet owned and operated by the citizens of India for its national security and commercial needs, and for matters connected therewith or incidental thereto. मैं इस बिल के विरोध में इसलिए खड़ा हूं कि एक शब्द शुरू में चला था पीपीपी, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, लेकिन इसको हमने कुछ ही दिन में प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज होते हुए देखा था, और अब ये 4P में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है इस बिल से। वो है पब्लिक प्रॉपर्टीज फॉर प्राइवेट प्लेयर्स। इस बिल के जरिए ये कोशिश की गई है और निजी मुनाफे को देश की सुरक्षा और देश हित में बताने की कोशिश की गई है। अभी वेणुगोपाल जी ने, माननीय सदस्य ने रखा था कि हल्दिया से लेकर के केरल के पोर्ट तक धीरे धीरे एक ही व्यक्ति का मोनोपोली बन रहा है। इस बिल में कहीं से भी इस मोनोपोली को चेक करने का, कंट्रोल करने का कोई प्रोविजन नहीं है, न तो भाड़ा नियंत्रण के मामले में, न ही मान लीजिए कि ड्रग्स बड़े पैमाने पर प्राइवेट पोर्ट से, प्राइवेट वेसल से आ जा रहे हैं, उसको नियंत्रित करने के मामले में, इसी तरह से इलीगल अन्य चीज़ों के मामले में कोई प्रोविजन इसके भीतर दिखाई नहीं देता है। मैंने इसको पढ़ने की कोशिश की गई है और ये निजी मुनाफे को ही नेशनल सिक्योरिटी बताने की कोशिश कर रहा है। तो हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे मध्यकाल में राजाओं ने अपने व्यापार के लिए भिन्न भिन्न वेसल्स चला रखे थे, प्राइवेट ढंग से वो यूज करते थे, उसी तरह से इस पार्लियामेंट को अपना नेशनल ग्रिप कमजोर करते हुए प्राइवेट के हाथ में हवाले कर देने के लिए बिल लाया गया है। और सबसे दुखद बात यह है कि इसको कहा जा रहा है कि ये आज़ादी के 75वें साल में ये एक्ट हम स्वीकार कर रहे हैं। ये लगता है कि राष्ट्र हित और राष्ट्र की सुरक्षा से रिलेटेड बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ हम प्राइवेट हाथों में सौंपने जा रहे हैं इस बिल के जरिए, और इसीलिए मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, इसके खिलाफ मैं बोलता हूं। धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री के नबस्कानी जी। நன்றி மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களே. துறைமுகங்கள் சம்பந்தமான மசோதாவிலே பங்கேற்று உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். எங்களுடைய தமிழர்கள் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே ராஜராஜ சோழன் வியட்நாம், கம்போடியா, லாவோஸ் என்று சைனா வரை கப்பல்களை வைத்து துறைமுகம் மூலமாக ஆட்சி செய்தவர் கடாரம் கொண்டான் என்ற பெயரும் உண்டு. அதுபோல வ.உ. சிதம்பரனார் சொந்தமாக கப்பலை வாங்கி ஆங்கிலேயரை மிரள வைத்த ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர். இப்படி துறைமுக மேலாண்மைக்கு தமிழர்கள் பெயர் பெற்றவர்கள், சிறந்து விளங்கியவர்கள். அந்த காலத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட துறைமுகங்கள் தமிழ்நாட்டிலே சிறப்பான முறையில் செயல்பட்டு வந்தது. அதன் மூலமாக வணிகம் செய்ய முடிந்தது. இன்றைக்கு 2-3 துறைமுகங்களை தவிர மற்ற அனைத்து துறைமுகங்களும் செயல்பாட்டிலே இல்லாமல் இருக்கின்றது. இயற்கையாக அமைந்த துறைமுகங்கள் எல்லாம் மூடிவிட்டு இன்றைக்கு செயற்கையாக துறைமுகங்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கின்றது இந்த அரசு. கிட்டத்தட்ட 5000 கோடி ரூபாய் குஜராத்திற்கு நிதி ஒதுக்கி, மகாராஷ்டிராவுக்கு அருகிலே நிதி ஒதுக்கி துறைமுகத்தை மேம்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். எங்களுடைய துறைமுகம் எல்லாம் மூடப்பட்டு கிடக்கின்றது. நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் குஜராத்துக்கு அமைச்சரா, இந்தியாவுக்கு அமைச்சரா என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு இருக்கின்றது. தமிழகத்திலே இருக்கக்கூடிய சிறப்பாக செயல்பட்ட கடலூரிலிருந்து நாகப்பட்டினம் கடற்கரை ஏரியா முழுவதும் சீர்காழி என்று தொண்டி வரைக்கும் இருந்த அந்த காலத்தில் செயல்பட்ட துறைமுகங்களை எல்லாம் மேம்படுத்த வேண்டும். அப்படி மேம்படுத்துகின்ற போது பல நாடுகளோடு வணிக ரீதியான தொடர்பு, கலாச்சார தொடர்பு ஏற்படும். அப்படி அந்த காலத்தில் சிறப்பாக முறையில் செயல்பட்ட துறைமுகங்களை மீண்டும் உருவாக்க வேண்டும். இன்றைக்கு இதில் வேதனை என்று சொன்னால், அந்த துறைமுகங்களை எல்லாம் தனியார் மயமாக்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த அரசு. அத்தனையும் அதானிக்கு தாரை வார்த்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த அரசு. அதெல்லாம் நிறுத்தப்பட வேண்டும். கடல்களை பாதுகாக்க வேண்டும்.
கடலை பாதுகாக்கக்கூடிய மீனவர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். எங்களுடைய தமிழ்நாட்டு மீனவர்கள், ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் தொடர்ந்து சிறைபிடிக்கப்படுவது, அவருடைய படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவது தொடர்ந்து இந்த அவையிலே தொடர்ந்து அதை வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். பலமுறை ஒன்றிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து இதை சொல்லியிருக்கின்றோம். எங்களுடைய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு முறையும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருக்கும் மாண்புமிகு பிரதமருக்கும் இது சம்பந்தமாக தொடர்ந்து வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார். ஆனால் மீனவர்கள் சிறைபிடிக்கப்படுவது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது. அவருடைய படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்படுவது, அந்த படகுகளை எல்லாம் இலங்கை அரசு நாட்டுடைமை ஆக்கிறது, ஏலத்தில் விடுகின்றது. அவர்களுக்கு எந்த நிவாரணமும் கொடுக்கப்படுவதில்லை. ஆனால் எங்களுடைய தமிழக அரசு சார்பில் அங்கே இலங்கையிலே பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு படகுக்கும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் 6 லட்சம் ரூபாய் உதவி கொடுத்தார்கள். இப்போது அதை உயர்த்தி 8 லட்சம் ரூபாயாக அந்த நிவாரணம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் ஒன்றிய அரசின் சார்பில் 1 ரூபாய் கூட அவர்களுக்கு நிவாரணம் கொடுக்கப்படவில்லை. அவர்கள் கைது செய்யப்படுவதையும் இந்த அரசு தடுக்கவில்லை. அவர்களுக்கு இன்றைக்கு இலங்கை அரசு அதிகமான அபதாரத்தை விதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ரூபாயை அந்த படகுகளுக்கும் கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்கள் பிணையில் வருவதற்கும் அந்த அபதார தொகையை விதித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த இலங்கை அரசை கட்டுப்படுத்த முடியாத அரசா நம்முடைய இந்திய அரசு இருக்கு என்கின்ற ஒரு கேள்வியை உங்களிடத்தில் மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் மூலமாக வைக்கின்றேன். இலங்கை அரசு பாதிக்கப்பட்ட போது, பொருளாதார ரீதியாக மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்ட போது மனிதாபிமான அடிப்பிலே இந்தியா மிகப்பெரிய உதவி செய்தது. அதையெல்லாம் வரவேற்கின்றோம். அதே நேரத்தில் எங்களுடைய மீனவர்கள் அங்கே பாதுகாப்பாக மீன் பிடிக்கக்கூடிய உரிமையை இந்த அரசு பெற்றுத் தர வேணாமா? கச்சத்தீவு பகுதியிலே தமிழக மீனவர்கள் மீன்பிடிப்பதை, பாதுகாப்பாக மீன்பிடிப்பதை, அவர்கள் கைது செய்யப்படுவதை தடுக்க இந்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்கணும். இது சம்பந்தமாக தொடர்ந்து வலியுறுத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம். மீனவர்கள் தான் இந்த கடலுக்கு பாதுகாப்பு. அதன் மூலமாக தான் நீங்கள் இந்த துறைமுகத்தை மேம்படுத்தக்கூடிய இந்த மேலாண்மை திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும். நீங்கள் கடல் போக்குவரத்தை சீர்படுத்த முடியும். கடலை பாதுகாக்கக்கூடிய மீனவர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துங்கள். குறிப்பாக எங்களுடைய தமிழக மீனவர்கள், குஜராத் மீனவர்கள் பாகிஸ்தானுடைய கடற்படையால் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய இந்த அரசு தமிழக மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்படும் பொழுது அத்தகைய நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தமிழக மீனவர்களுடைய பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும். இரு நாட்டு மீனவர்களுடைய அமைப்பு பிரதிநிதி பேச்சுவார்த்தை மீனவ பிரதிநிதிகளோடு நடத்தி இந்த பிரச்சனையை முடிவு கொண்டு வேண்டும். பல நாடுகளில் அண்டை நாடுகளோடு மீன்பிடிக்கக்கூடிய மீனவர்கள் எந்த பிரச்சனையெல்லாம் மீன்பிடிக்கின்றார்கள். இந்த இலங்கை தமிழக இந்திய மீனவர்களுடைய பிரச்சனை மட்டும் தீர்க்கப்படாமல் இருக்கிறது. ஒன்றிய அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி தீர்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி. Honorable Member Sri Anand Bhadoria ji. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 पर अपनी राय अपनी पार्टी की तरफ से रखने का अवसर प्रदान किया है। सभापति महोदय, हम लोग इस सदन में जब से चुन करके आए हैं, सरकार की तरफ से कई सारे विधेयक प्रस्तुत किए गए, लेकिन ज्यादातर जो बिल आए हैं उसके 2 कारण हमें समझ में आए। एक तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाना कि हम इतने अमेंडमेंट लेकर के आए हैं, हमने इतने पुराने नियमों में संशोधन किया है, और दूसरा कहीं ना कहीं जो आम आदमी है उसके व्यापार के बिना पर, उसकी जरूरतों के बिना पर, उसके व्यापार के हितों की अनदेखी करके जो बड़े व्यापारिक मित्र हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने के लिए विधेयक, अमेंडमेंट, बिल लाने का काम हो रहा है। जो दर्जनों जो तटीय पोत परिवहन विधेयक आया है, सभापति जी, हम कहने को तो मछुआरों के और तटीय इलाके के लोगों के हितों को लेकर के आए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हम 1 अप्रैल को जब आज चर्चा कर रहे हैं 1 अप्रैल को, तो कहीं ना कहीं ये मछुआरों के लिए एक धोखा साबित होने का काम हो। हमने रामचरितमानस में भी, सभापति महोदय, इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि जो मछुआरे हैं वो अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखें तो उन्हें निषाद समाज के लोग निषाद समाज के अंतर्गत आते हैं,
केवट समाज के अंतर्गत आते हैं। ये वही केवट और निषाद समाज के लोग हैं जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को नौका में बिठा करके गंगा पार कराने का काम किया था और उतराई भी नहीं ली थी, लेकिन आज वो मछुआ समुदाय संकट में है। सभापति जी, देश के समुद्री व्यापार, मछुआरों और छोटे जहाज मालिकों के हितों के साथ एक बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इस बिल में कहा गया है कि भारतीय स्वामित्व वाले जहाजों को लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन यह सिर्फ एक छलावा है, क्योंकि जब आप विदेशी कंपनियों को भारतीय तटीय व्यापार में शामिल कर रहे हैं, आंकड़े बताते हैं कि भारत का 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्ग से होता है, लेकिन हमारे पास अपने जहाजों की तो संख्या नगण्य है सभापति जी, अपने जहाज है ही नहीं। तो फिर सरकार विदेशी जहाजों को भी तटीय व्यापार में लाने का काम करेगी और जिससे भारतीय शिपिंग कंपनियों का व्यवसाय चौपट हो जाएगा। क्या सरकार को अपने जहाज बनाने पर, अपने जहाज लाने पर काम नहीं करना चाहिए था? कबीरदास जी ने कहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। लेकिन सरकार गहरे पानी में नहीं उतरना चाहती, केवल विदेशियों को लूटने का रास्ता देना चाह रही। इस बिल में सर्विसेज को तटीय व्यापार में शामिल किया गया, जिसमें तेल, गैस की खोज, समुद्री शोध जैसे काम आते हैं, लेकिन मछली पकड़ने को इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को तटीय इलाकों में ड्रिलिंग और खनन का अधिकार मिलेगा। भारत के लाखों मछुआरों के अधिकारों की अनदेखी होगी। क्या यही सरकार का सबका साथ और सबका विकास है? कहीं ना कहीं मछुआरों की आवाज को दबाना है। इसलिए हम कहना चाहते हैं सभापति जी, कुछ मछुआरों के हितों पर भी काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मछुआ आवास देने का काम किया था। मछुआ समुदाय के केवट निषाद समाज को उन्होंने तालाबों के पट्टे देने का काम किया था, उनकी पेंशन देने का काम किया था। तो क्या माननीय मंत्री जी को इस तरीके की कोई योजना नहीं लानी चाहिए जिससे इस मछुआ केवट निषाद समाज के लोगों का कल्याण हो सके? उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो ये जो जातियां हैं, इनको SC ST का दर्जा देने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव बना करके भेजा, लेकिन वो भी अभी लंबित है। सरकार निषाद केवट समाज को आरक्षण नहीं देना चाहती। इसलिए सभापति जी, हम कहना चाहते हैं, पुराने कानून में बिना लाइसेंस तटीय व्यापार करने पर 6 महीने की जेल या 10,000 रुपए का जुर्माना था। अब इस बिल में बढ़ा करके 15 लाख या कमाई का 4 गुना कर दिया है। ये किसके हित में है माननीय मंत्री जी? बड़ी कंपनियों के लिए तो ये छोटी रकम है, लेकिन जो छोटे जहाज मालिक हैं, जो मछुआरे हैं, वो कैसे इतना बड़ा अर्थदंड दे पाएंगे? इसलिए सभापति जी, इस बिल में डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी जहाज को जब्त कर सकता है। ये प्रावधान सरकारी दमन को बढ़ावा देगा कि क्या ये सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ हैरेसमेंट नहीं है? इसलिए सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, आज मछुआरों का खाली हाथ और आंखों में पानी, यही मछुआरों की यही कहानी। सरकार उनका समंदर छीन रही है और आंखों में पानी भर करके छोड़ रही है। सभापति जी, इस बिल में राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय शिपिंग रणनीति बनाने की बात कही गई है, लेकिन इसमें 2 साल का समय दिया गया है। यानी सरकार के पास कोई योजना तैयार नहीं है, वो बिना सोचे समझे कानून ला रही है। आपका इशारा मैं समझ रहा हूं। मैं एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, ये बिल राष्ट्र विरोधी है। इस बिल में भारतीय समुद्री हितों को बेचने की तैयारी है। ये छोटे जहाज मालिकों, मछुआरों, देशी शिपिंग उद्योग के लिए विनाशकारी है। मैं सरकार से मांग करता हूं, इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए, इस पर व्यापक विचार विमर्श किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह साबित होगा कि सरकार विदेशी कारपोरेट के एजेंडे पर काम कर रही है। अंत में सिर्फ यही कहना चाहता हूं
सत्ता के दीपक जल रहे हैं पर मछुआरे अंधेरे में हैं, चौराहे पर खड़ा हुआ विकास सिर्फ भ्रष्ट तंत्र के फेरे में है। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Honorable Member Dr. Rani Sri Kumar ji. Thank you, Honorable Chairperson, sir. I rise to talk on this significant coastal shipping bill, which this government claims will promote coastal trade and encourage domestic participation. Despite being a country with about 7,500 kilometer coastal length, 14,500 kilometer inland waterways length, and being strategically located near major international shipping lanes, we have not utilized our crucial waterways to our full potential. Inland freight transport is, just as per Niti Aayog, maritime transportation, particularly coastal shipping, is widely recognized as a more cost-effective alternative to other modes of transport. So, when this bill was introduced, we hope that this bill would facilitate coastal shipping and promote employment opportunities for our people. But this bill has not only failed to address the crucial issues, it has also made it worse. As per Section 345, the Director General has been given considerable discretionary power in assessing applications and imposing additional conditions. While flexibility is necessary, excessive discretion without clear guidelines could lead to inconsistent or biased decision making. The Director General is given broad discretionary powers to suspend, revoke or modify licenses. While such powers are necessary for regulation, there are concerns about the lack of checks and balances. If misused, this could lead to arbitrary action without sufficient oversight. The criteria for suspension, revocation or modification of the license are broad, including violations of any conditions of the license or failure to comply with any applicable law. This could be seen as overly vague, leading to uncertainty and potential misuse. These sections does not clearly mention about any appealing process or mechanism for challenging the suspension, revocation or modification of a license. This could leave licensors without an effective way to contest decisions they perceive as unfair or unjustified. The term reasonable opportunity to be heard could be interpreted differently, leading to arbitrary application of the law. A more defined process could ensure fairness and clarity without giving undue power to the Director General of Shipping. As per Section 8 of this bill, the Union Government must publish a national coastal and inland shipping strategic plan within 2 years of the Act's commencement and update it every 2 years. The plan will include assessments of coastal shipping routes, operational improvements, long-term traffic forecasts, best practices, new routes, promotion of Indian vessels, and other necessary matters. A committee will be formed to draft the plan, including members from various relevant agencies such as Director General of Shipping, Inland Waterways Authority, major ports, state maritime boards, ship owners, seafarers, and maritime experts. The problem with this section is that the strategic plan is mandated to be drafted and updated every 2 years. But who is responsible for its execution? There is no mention of performance monitoring to ensure that improvements are implemented. The committee is only responsible for drafting, not ensuring the implementation. The committee consists mostly of government representatives and some industry players. Key stakeholders like cargo owners, logistic providers, and coastal community representatives are missing. Sir, the strategic plan mentioned promotion of Indian vessels, but how this will be done is unclear. No specific incentives, examples of subsidies, tax benefits are mentioned to encourage domestic vessel participation. Developed countries like China, European countries, and USA are giving incentives and they are giving tax benefits to their own crews, and they are giving more efforts to develop the ports to enhance the shipping traders. But in India, despite playing Indian flags and employed Indian crew, Indian shipping companies has to pay high taxes, but the foreigners are enjoying the exemptions. The exemptions and the cost advantages should be given to the Indian shipping traders also. Very good, very good. The coastal shipping bill
2024 introduces stringent penalties to ensure compliance, but a balanced approach is necessary to foster industry growth. While strict enforcement is essential to maintain safety and efficiency, excessive penalties without remedial provisions could discourage new entrants and smaller operators. Currently, penalties under Section 15, 16, 18 impose heavy fines, imprisonment, and vessel detention for violations like unauthorized operations, expired licenses, and false reporting. However, the absence of grace periods or rectification opportunities may create intended barriers. To promote compliance without stifling participation, the bill could incorporate graduated penalties, warning mechanisms, or rectification periods for minor infractions. This would ensure regulatory discipline while allowing businesses, especially new entrants, to adapt to compliance requirements without disproportionate deterrence. Sir, India's coastline is not just a trade route. It is in a line of defense. We have seen smuggling, illegal fishing, and even security threats from the sea. But this bill is silent on coastal surveillance, naval coordination, and security measures. Nowadays, drug trafficking through Indian ports remains a growing challenge. One of the most critical measures India must adopt to curb drug trafficking is the enhancement of the port surveillance and the integration of advanced technology in security operations. If India fails to modernize its port security infrastructures, its port will remain soft targets for international syndicates, undermining national security, public health efforts. Sir, கடைசியாக ஒன்றை சொல்லிக் கொள்கிறேன். அண்டை நாடுகளுக்கெல்லாம் பொருளாதார நெருக்கடி வரும்போது உதவி செய்கின்ற இந்த ஒன்றிய அரசு அண்டை நாடுகளால் எங்களது தமிழக மீனவர்கள் பாதிக்கப்படும் போதும் துன்புறுத்தப்படும் போதும் மௌனமாக கையை கட்டிக்கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருப்பது மிகுந்த வேதனை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டால் மீனவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள். இந்த ஒன்றிய அரசு எங்கள் தமிழக மீனவர்களிடம் மாற்றாந்தாய் மனப்பான்மையுடன் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஆனால் நாங்கள் அப்படி அல்ல. இந்திய மீனவர்கள் எல்லாரையும் எங்களது சகோதரர்களாகவே கருதுகிறோம். எனவே இந்த மீனவர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் கொண்டு வரப்படும் இந்த மசோதா கொண்டு வரப்பட்டால் நாங்கள் அதை ஆதரிக்கவும் மாட்டோம், அதை நாங்கள் அமல்படுத்தவும் விட மாட்டோம். Therefore, Tamil Nadu government, under the able leadership of our Chief Minister, taking lot of steps and measures to uplifting the traders. So I request the Union government to follow the steps of our able leader, our Honorable Chief Minister, in uplifting the traders. Therefore, I ask the Union government to modify this bill accordingly, taking into the concern of the coastal state governments, industry stakeholders, and the fishermen community. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member N.K. Pemsandanji. Yes, thank you very much, Mr. Chairman, sir. I rise to support this bill with certain strong reservations and concerns and seeking clarifications from the Honorable Minister. Sir, this bill, there is a Coastal Shipping Bill 2024, that is 2025, seeks to repeal Part 14 of the Merchant Shipping Act 1958, except Section 411, capital A. So the primary advantage of having coastal shipping is that it can result in shaping necessary national and state level policies and programs targeted towards transportation, logistics, and trade. So this coastal shipping bill, the government is forced to bring this bill according to my limited information, limited knowledge. This coastal shipping bill 2024 is brought in because of the competition with the foreign flag vessels and the Indian flag vessels. So it is giving a preferential treatment to the Indian flag vessels. That is why I am supporting this bill. Sir, a large number of coastal population is depending on the activities related to the seas and bays. By means of this legislation, government intends to improve the modal share of the coastal shipping from the current rate of 6.4% is the rate
model rate of, as per the present rate of coastal shipping, and it is to be increased to 7.5% by 2030 and ultimately 12% by 2047. Sir, the share of coastal shipping in Japan, European Union, is 5 to 6 times higher than that of India. And as far as China is concerned, it is 7 times higher than that of India. This is the global scenario, global situation prevailing as far as the coastal trade is concerned or coastal shipping is concerned. My specific question to the Honorable Minister is whether the government is able to achieve the target of 12% modal share by 2047 through this legislation alone. According to me, it is not possible unless and until the government have a strong political will to implement the program, implement the provisions of this bill in a better way.